drop that shit. Let's drop that shit. वेलकम बैक टू चैनल और स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी एक गेम ऑफ थ्रोन्स की स्ट्रीम में। और आज हम खेलेंगे एपिसोड नंबर 5 जो कि रहेगा हमारा सेकेंड लास्ट एपिसोड और कल लास्ट एपिसोड होगा। बट उससे पहले बहुत सारे बदले लेने हैं और एक बड़ी सी आर्मी खड़ी करनी है जिसका दारोमदार हम पे है, जो कि अभी हम करेंगे, निभाएंगे। और सारी जगह आज स्ट्रीम एलिमेंट्स लग रहा है छुट्टी पे गए हुए, आए नहीं है। स्ट्रीम एलिमेंट्स क्या हो गया इनको पता नहीं, छुट्टी पे गए हुए लग रहा है। पर ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टा पे उसको डालना तो भूल ही गया, डाल देते। आ गए लोग स्ट्रीम एलिमेंट, भाई साहब का नाम लिया, जैसे ही हम आए वैसे वो भी आ गए। इंस्टा का लिंक पिन करना था, अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्लो हुआ है स्ट्रीम एलिमेंट। नहीं यार, मेरा नेट स्लो चल रहा है लग रहा है मेरे को। तो ये कर दिया इंस्टाग्राम पे पिन, तो अगर तुमने फॉलो नहीं कर रखा है तो जाके फॉलो कर लो। मैं तब तक स्टोरी डाल देता हूँ फटाक से, आएगा कोई नहीं पता है मेरे को, पर फिर भी फॉर्मेलिटी। ये डाले या फिर ये डाले, टाइटल में शायद डे 4 ही है अभी तक, डे 3 चे। कल का डे 4 भी भूल गया मैं, डे 5 आज का भूल गया। कल मतलब आफ्टर स्ट्रीम अपन चेंज कर लेंगे, डे 4 कर लेंगे कल का, आज का कर लेंगे डे 5। आज का 5वां दिन है ये, वैसे 5 दिन हो गए गेम ऑफ थ्रोन्स खेलते खेलते। अरे रे अरे रे, लेट्स गो। आज मेरी आवाज शायद मैंने कम रखी है क्योंकि मैं चाहता हूँ गेम का जो डायलॉग्स रहते हैं ना तुम वो सुनो। मेरी आवाज आएगी तुमको, टेंशन मत लो, बट वो सिंक पिटाने के लिए मैंने ऐसा रखा है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी अपन एक नई वाइब भी क्रिएट करने वाले हैं, तो बस बहुत जल्द आ ही गया। 6 से 4 दिन के अंदर अंदर वो एक नई वाइब भी क्रिएट होते हुए दिखेगी तुमको स्ट्रीम पे। मजा करेंगे फुल साथ में, क्या है वो तुमको पता चल जाएगा। तैयारी मेरी चालू है, मतलब अभी तक चालू नहीं है, दिमाग में तैयारी हो चुकी है, एक्शन में तैयारी होनी बाकी है, क्योंकि हम बहुत जल्द कर लेंगे।
है, टाइम है अभी। और एक बात बोलनी थी मेरे को, मेरे दिमाग से निकल गई है, जो रुको मेरे को सोचने दो, मेरे को एक बात बोलनी थी। हाँ, और बीजीएमआई की पब्लिक टेंशन मत लो, आज सेकंड लास्ट डे, कल आखिरी दिन होगा, उसके बाद से तुमको बीजीएमआई दिखने वाला है। तो जितनी भी मेरी बीजीएमआई की पब्लिक है, जो कि ऑलमोस्ट वही है, एक या दो है वो वही है, तो आ जाना ट्यूसडे से तुम्हारा काम करने, बीजीएमआई देखने, है कि नहीं। ट्यूसडे से अपन बीजीएमआई से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आज वेडनेसडे आना, वेडनेसडे, मंडे स्टार्ट हो गया, अभी वेडनेसडे आना, ठीक है गाइस। बीजीएमआई वालों, वेडनेसडे आना, वेडनेसडे भी नहीं, थर्सडे आना, नहीं वेडनेसडे आना नहीं, थर्सडे आना। आज आना, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा बस। और अपने को करना था अपना फोन को कनेक्ट, लेट्स कनेक्ट द फोन वा, करते हैं गेम को स्टार्ट वा, और लेते हैं बूम बम फुल। देखते हैं आज की स्टोरी किधर तक लेके जाती है हमको, क्या ट्विस्ट एंड टर्न मिलता है, क्या हम बदला ले पाएंगे, बदला और बदले की आंख ले पाएंगे कि नहीं, हम देखेंगे आज। एक्साइटेड तो काफी है। और हाँ, और एक बात, कल जिधर गेम आकर के रुकी थी कि उसकी बहन ने धोखा दिया है हमको, उसकी बहन ही वो है जो इधर की बात उधर कर रही है, उसकी बहन ही दगाबाज है, उसकी बहन ही धोखेबाज है, सब उसकी बहन है। तो आज हमको देखना होगा ये क्यों उसकी बहन ने ऐसा हमारे साथ किया, अपने ही घर वालों के साथ उसने ऐसा क्यों किया, ये आज देखना होगा। इसकी हम छोड़ के गए थे स्टोरी यहाँ पे कल, और अभी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सवाल बहुत है, देखते हैं अभी गेम में चल के क्या हमको उन सवालों का जवाब मिलता है, क्या हम उससे सेटिस्फाई होते हैं, या फिर क्या इसकी बलि चढ़ेगी। आज मेरे को फीलिंग आ रही है कि उसकी बहन की बलि चढ़ सकती है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा धोखा दिया, और अगर ऐसा मौका मिलता है तो हम उसकी बलि चढ़ा देंगे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसके वजह से उसके भाई और उसके डैड की जान जा चुकी है, उसका एक छोटा भाई फंसा हुआ है, हम चौथे यहाँ पे आधे लंगड़े होके अटके हुए रॉड्रिक, तो सजा तो उसको मिलेगी जरूर। देखते हैं अभी सजा किस बेसिस पे मिली जाती है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, गेम में चलेंगे, ठीक है भाई। बहुत इंट्रो वगैरह दे लिया मैंने, तुम लोग वैसे भी कोई देखते नहीं हो, इंट्रो विंट्रो तुमको देखने में इंटरेस्ट नहीं, तुमको गेम तक देखने में इंटरेस्ट नहीं, तो तुम इंट्रो क्या देखोगे। चलो फिर भी गेम पे चलते हैं। हेलो सर, क्यों भाई आ गए क्या, बीजीएमआई और वैलोरेंट प्लेयर, एनिमे के दीवाने आ गए क्या। लेट्स गो। शुरू की बीट मस्त है स्ट्रीम स्टार्टिंग की, महासंग्राम के टाइम पे मिली थी, सारे में इंट्रो ही बना डाला अपन ने। लेट्स गो, ड्रॉप द शिट। रुको भाई, रुको भाई, रुको। बीजीएमआई में तो बोर है अभी, खेलने का भी मन नहीं करता बिल्कुल भी, उसके अलावा और खेलने का मन भी तो नहीं करता ना कुछ तेरा। बीजीएमआई प्लेयर, अभी के लिए अपन कंटिन्यू करेंगे हमारी आगे की स्टोरी के साथ। साउंड थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि कल मैंने देखा डायलॉग की आवाज थोड़ी कम आ रही है, प्रॉपर डायलॉग की आवाज आनी चाहिए, तो ही तो फील आएगा। मेरे डायलॉग तो मैं देते रहता हूँ, इनके डायलॉग भी मैंने ले। इधर है एपिसोड 5, लेट्स गो, विन एंड डाई। रुको रुको रुको, ब्राइटनेस बढ़ा दे तेरे बाबा। Previously on Game of Thrones. लेट्स गो। You'd help the Second Sons, guide them into Marine. I can't, Asha. ये आशर का विषय है यहाँ पे। Our only chance. Get them into the city, help them liberate Marine, and इसका I तो will आधा see that आधा you काम are अपन ने कल कर लिया था, ऑलमोस्ट काम 25 था इसका आधा। इसकी इसकी आदत बहुत खराब की थे, रपा रप चाकू से इसमें।
वो गया भी इतना भारी तरीके से था, आई एम ए फ्रेंड। और भाई ने इतना बोल के गया था कि कोई भी हो जाए आना मत, मर जाते सर अगर हम बचाने नहीं आते तो। ये लो बहन मिल गई बिछड़ी हुई इसको। ये रिकैप दिखा रहे कि अभी तक अपन ने क्या क्या किया है। 4 एपिसोड में अपन ने क्या क्या किया ना उसका रिकैप दिखा रहे। 4 चौथे एपिसोड में। I have to get in there, Sarah. Lord Whitehill is up to something. He's conspiring against my family, and someone in there is helping him. Andros is hiring sellswords. ये बेवड़ा ने भी कुछ राज खोले थे। What? He's building an army for Lord Whitehill, big enough to march ये बेवड़ा against है, Iron. खतरनाक है। खतरनाक नहीं मतलब बेवड़ा है थोड़ा। I may be leaving you here. जब कांपता है, थर-थर होते हैं। यही तो है धोखेबाज उसकी बहन। कैसे मस्त बैठी थी, ये देखो। Rodri! I'm told you're a man who can't be broken. I've decided to come see for myself. अब आएगा मजा। अब जब पेलम पाल देंगे ना सबको, अब आएगा मजा। बदला बदले की आग तो अभी पूरी होगी। ये सीरीज की स्टोरी पर ही बेस्ड है या अलग-अलग है? To make a match for me, and Talia's been बता दो बाद में देखो। company. Think she likes अलग है स्टोरी, सीरीज से अलग है, बहुत अलग है। कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, अलग स्टोरी है, सिर्फ नाम सेम है बस। Still a flower, just dies more quickly. We could be a family, Lord Forrester. You'd like that, wouldn't you? Your mother may need some convincing. You killed our brother. तूने I've तो killed भाई को मारा था। many brothers, sisters too. इसकी गेम मत हो But गया। let's put our happy day to the side for a moment. Walk with me. Oh, you won't need your sword. Not where we're going. नहीं रे, I'm not भरोसा going नहीं करता without मैं। my sword. मैं तेरे पे भरोसा नहीं करता। हाँ, और बहुत डरा हुआ है। इतना धोखेबाज है ना, इसने एंड टाइम पे इसी पलटी थी है ना। अच्छा बेटा, इतना माच। There. हमारी स्वॉर्ड निकाली, महंगा पड़ेगा सर। खून के आंसू रोना है आपकी फैमिली वालों को, पहले मैं वादा कर लिया था। This is Lord's business, not a child's. I say she comes. I don't trust अभी her. तक इसको ये लोग धोखेबाज मान नहीं रहे। ये इससे शादी के लिए आया है बात करने के लिए। मेरे को तो डाउट आ रहा है धोखेबाज, क्योंकि हंस वस रही थी बहुत। जब हम आए थे ना तो हंस वस बहुत रही थी, फुल हंस वस के बात कर रही थी। इसके भाई को जिसने मारा उससे एकदम हंस वस के बात कर रही है। मतलब दाल में कुछ तो काला होगा ना, धोखेबाज तो होगी ना। और ऑलरेडी पता है इधर की बात क्यों कर रहे हैं। Lord Bolton. Better than yours. Polite of you to ask. I loved playing in the woods when I was your age. Still do. So many places to hide. I've gotten very good at finding people. Roderick? It's all right, Talia. That reminds me. Where's Griff? I expected to be greeted by him on my arrival. Bit of a disappointment to have to show myself in. And here I had such high मेरा कुछ संबंध ही नहीं भाई उससे। Now should I know? तेरा भाई है, तू None of my देख। concern. My concerns are your concern. हाँ, तेरा I भाई है, assume तू you देख forgot भाई। that when you took them prisoner. Oh, I really hoped things might be different with you. I hoped we could be friends. Friends, After all, I was friends। generous. अच्छा फ्रेंड्स बनना है सर अभी। अरे बेटा कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत तेरे को। Yet रगड़ you रगड़ went के behind घिसड़ my घिसड़ के back, मारूंगा। इसने जो काम किए ना, holding the Glen. फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो मैं दिखाता हूँ भाई। ये कौन है? I'm not sure how you managed that. The Glenmores have sworn their loyalty to my father. गेस्ट है Lady भाई। Elena Glenmore is our guest. The soldiers Guest है, accompanied her sir, to guest ensure her है। safety. If her Hello, safety man. is a concern, perhaps she should not have come to Ironrand. Well, I'm certainly glad we've sorted this out. Thank you for being so forthcoming. ये कभी भी धोखा दे सकता है, मेरे को इस पर रखती पर भी भरोसा नहीं है। Ah, here we are. ये कौन? Roderick!
you to अच्छा slay. ये उसकी इसकी होने वाली बीवी का भाई है जो लटका हुआ है वहाँ पे। Someone has to pay. You didn't think it would be you, did you? Your damaged goods. Someone else's leftovers. No one has to pay. Let's just keep talking. बोलना क्या चाहिए तेरे को? बोलना क्या चाहिए? उसको काय को मार रहा है? मेरे से बात करना। Look at what you've done. I hope it was worth it. Is it worth it, Arthur? अरे Talia, don't look away. It's very important you see what comes of disobedience. Roderick, make him stop. Please, do something. करना पड़ेगा Pay for उसका। this, Ramsay. इसका भुगताना बनना पड़ेगा। Look at him, Talia. See what your brother's done. Please, Lord Ramsay. Sorry, but they'll never learn. नहीं otherwise. नहीं यार नहीं। ये मारा तो तेरी गेम इधर ही डालूंगा। Mercy, my lord. Did Roderick show mercy to Griff? अबे This ग्रिफ is को his मारा थोड़ी fault. ना है। मारा थोड़ी ना उसको। That's a lot of blood. Please stop, Lord Ramsay. रुक जा। No. देख वॉर्न कर रहा हूँ, रुक जा, बहुत गलत होएगा। तेरी माँ की इसको छोड़ूंगा नहीं इसको। एक मुक्के एक बेइज्जती का बदला लेने वाला हूँ मैं आखिर में। हाँ डील क्या है बोल? You want to kill me, don't you? Release him. हाँ 1v1 लड़ेगा। Go on. Prove how strong you are. मार दूंगा। Do it for Ethan. मार दूंगा। No, Roderick. He's toying with you. Do it. Come on, मारूंगा, Roderick. मैं मारूंगा। मेरे को इसको कुत्ते की मौत मारनी है। तो मारेंगे, छोड़ेगा I'm नहीं। impressed. Woo. Lucky for me, you're a cripple. I may have misjudged you, Roderick. I came here to kill you. But now, I'm thinking it might be far more entertaining to watch you and Lud tear each other to pieces. हाँ। I never 1v1 लड़ना, आना 1v1 ना। fucking पट रही है क्या? shitstorm of a whole आना 1v1 I ना। have better things to do than to play पट रही है wet इसकी to 1v1 you नहीं and लड़ेगा। Lud. अरे So, डरपोगे, settle ये this डरपोगे, on ये your 1v1 own. लड़ेगा Last नहीं। house standing wins. Otherwise, I'll kill you both and be done with it. चल House Forrester लड़। will win this fight. You're very लड़ना, हाँ लड़ना। confident for a man with no army and half a face. हाँ चलेगा, अकेला लड़ता मैं। 1v1 लड़ेंगे, चल। And one more thing. अरे Can't leave a job half finished. Ready the horses? Not sure you'll have much luck finding other allies. कुत्ते की मौत मरेगा रैमजी, कुत्ते की मौत मरेगा। ये जो तूने किया है ना आर्थर के साथ, गिन के बदला लूंगा भाई, गिन के बदला लूंगा। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो तुम बोल रहे थे वैसा वैसा किया। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी गिन के करूंगा सब। अभी तक शांत था मैं, अभी सब गिन के होगा रैमजी। बदला तो लिया जाएगा, कुछ समय एक एक खून का बदला लिया जाएगा, एक एक उसका बदला लिया जाएगा। ये सबसे आगे रिक्शन ना लग जाए, मतलब रेस्ट्रिक्शन ना लग जाए, रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए। किस पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी? वो चैट पढ़ने की आदत नहीं है मेरे को थोड़ी सी, सॉरी। नहीं, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, एज रिस्ट्रिक्शन जैसे कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा वो चैट ऐसे बहुत समय बाद देख पढ़ रहा हूँ ना मैं, तो भूल के वो चैट कैसे पढ़ते थे। तो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, टेंशन। उसमें एज रिस्ट्रिक्शन जैसा कुछ है ही नहीं। ऑनेस्ट ऑफ वाइपर्स भाई, बदला तो लेना भाई। क्या लेंगे, टेंशन मत लो। 1v1 लड़ने दे। तू 1v1 आ रहे रैमजी, दम है ना? बिना हथियार के 1v1 लड़ मुक्के पे,
नहीं तो एक एक तलवार लेंगे और 1v1 लड़ेंगे। उसकी बीवी का भाई था रे, वो भी होने वाली बीवी थी, उसको पटा रहे थे अपन जस्ट। दिक्कत हुई अभी। दिक्कत हो गई रे, उसकी बीवी अभी, इसकी बहन जो है जो इतना आतर की, उसको मारा अभी, उसको कैसे संभालेंगे? वो तो गेम बजा देगी मेरी। Arthur. I'm so sorry. I keep asking myself what we've done to deserve such hate. Did we bring it on ourselves? Or is this house just cursed? Ramsay Snow is a bloody savage. He shames the entire north. Yet we're bound by law to obey him. By the gods, I miss the Starks. The Glenmore Guard are gone. Ordered home by Ramsay. So much for having allies. Ramsay says he's not taking sides anymore. He means to let the strongest house survive. I intend that to be us, Duncan. But can we even fight them? We don't have the numbers. ला देंगे ना, ऐशर आ रहा है ना। And if Mira's right about an army from the ऐशर south, मिलेगा ना, ऐशर है ना। Right now, everything depends on Asher. ऐशर है, बादशाह बंदा है, कर लेगा, संभाल लेगा, मेरे को भरोसा है उस पे। Where is my brother? ये आई है उसकी बहन, आर्थर की, इसका हाल बेहाल होगा। Let me through. आंदोरे, Roderick, tell me where he... तेरे को ही मस्ती थी ना, पंगे लेने थे। अब गया तेरा भाई, देख, इसके ही इसमें पंगे थे, अपन मारामारी करेंगे इसकी बीवी के। बीवी नहीं, होने वाली गर्लफ्रेंड, 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 समझ लो गर्लफ्रेंड है। I brought him into this. देखा? I asked him to help. He did this for me. अपने आप को ब्लेम मत कर, चल जो हुआ हुआ। You can't blame yourself, Elena. He was a grown man. He made his own choices. But he trusted me. He ठीक always है, has. छोड़ना, ध्यान दे, चल गया, भगवान को प्यारा होगा, आगे बढ़ते, चल गया अभी, चल। गेम है रे, इतना सीरियसली मत ले तू, गेम है, इसको मालूम नहीं ना ये गेम है, छोड़। He was so nervous, the father called him Quiver. And now to die, like this, tortured, mutilated. Ramsay Snow did this. He's a madman. Ramsay was here because of you, Roderick. अच्छा, मेरे पे अभी, And your allies. अब मेरे पे पलटी, मैंने बुलाया था तेरे को यहाँ पे तेरे भाई को लेके, मैंने तो बुलाया भी नहीं था इसके और इसके भाई को, खुद ही चल के आई थी भाई। ले लो अभी, उड़ते तीर लिए तो लो पंगे अभी, उड़ते तीर लिए तो सेना तो सीखो मैम, उड़ते तीर लिए आपने। Let's get you someplace, what? How do I do this, Roderick? How do I keep going? टेंशन मत ले, मैं ना, अरे मैं किधर जा रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी तक, टेंशन Where मत will I ले। find the strength? Pain fades in time. Never fully. But enough. I don't want it to fade. I don't want to forget him. You won't. How could you? भाई ये भूलेगी कैसे? I wish things had worked out differently between us. I feel so alone. सेंटी हो रही है I ना? should try to get some sleep. सेंटी मत हो, देख, सेंटी मत हो, कमजोर पड़ रहे। But I don't know what else to do. अकेली नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले, आखिर गर्लफ्रेंड है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है, हाँ, मैं हूँ, टेंशन मत ले, मरा नहीं हूँ अभी तक। हाँ मैं ना, टेंशन क्यों दे रहा हूँ, मैं हूँ ना, तू टेंशन मत ले, मैं ध्यान रखूंगा तेरा। ये ऐशर का विषय रे, मीरा आ गई रे, मीरा भी पागल है रे। I haven't seen you since the coronation feast.
How many ships do you suppose it takes to move an army? Ships? Why in the world would you... Never mind. Mira, I'll be honest. I took an enormous risk, defying Marjorie to get you into that feast. And you thanked me by making a scene with Lord Andros, in front of everybody. Marjorie saw, of course, and she knew exactly how you... भाई वो चिल्लाया था, मैं तो चिल्लाया भी नहीं था. चिल्लाया तो उसने चिल्लाया था. हाँ, मैं तो इज्जत में बात कर रहा था. And it's not the first time you've gotten yourself into trouble lately. देख तू तेरे काम से काम रख, मेरे काम में टांग अड़ाएगी, फंस जाएगी. समझ बात को. अपने काम से काम रख. Mira, you're not the girl I knew at Highgarden. She'd never be so reckless. And now, with Garibald refusing to talk to me, I just can't risk being associated with you. Not anymore. Marjorie is my only protection without him. I can't afford to fall from her good graces. गलती कर रही है मेरे को छोड़ के. Attitude करेंगे गाइस थोड़ा. हाँ, कौन रहेगा तेरे साथ? Marjorie, I suppose. अरे मार्जरी येड़ी है, वो उसमें अलग एटीट्यूड है. तू उसकी नौकरानी है, वो तेरी दोस्त नहीं है. इसको लग रहा है मालिक इसकी दोस्त बनेगी. अरे तो तेरे वो है ओनर है, समझ मतलब ओनर इन द सेंस उसके लिए काम कर रही है मार्जरी. I suppose it was then. Hey, रही Marjorie. Better go before she sees me. She already Here, thinks. Forrester. Hey, आए डाकू मंगल्स. Can I help you? You need to come with me. Now. Why would I? क्या ही करनी है? Don't make this difficult. अच्छा इतना एटीट्यूड हाँ भारी पड़ेगा सर. थोड़ा इज्जत में रहो, लड़की है, से बात नहीं करते. उसको नहीं पसंद है, मार्जरी को नहीं पसंद है इसकी दोस्त अपना मीरा. एशर का विषय, एशर आर्मी मांगती है. एशर क्या कर रहा है? जल्दी है आर्मी लेकर आ. Is that a joke? I had Dezor Zaraza in my hands and you made me let him go. अगर उसको लेट गो नहीं करते तो मेरे को आर्मी नहीं मिलती. समझ बड़ा बड़ा. हाँ, You chose your prize over my one chance of revenge. And for what? मेरे को मेरी फैमिली के लिए करना था. Oh yes, those wonderful people who exiled you. ठीक है ना, जो भी है आखिर फैमिली थे. मैं आगे कब्जा करेगा, तेरे को वहाँ की रानी बनने का है तो साथ में रह, नहीं बनने का तो चलती बन. हाँ, वहाँ का अगला लॉर्ड मैं बनूंगा. मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सब. समझ रहे हो? Please, I don't want to talk about it again. Asher, you're back. Yes, uncle, we are back. Uncle, let's collect our second sons and get out of here. If you did as you were told, Daenerys should deliver. Daenerys, huh? First names with the Queen now, are we? भाई सब जैसे जैसा उसने बोला हमने वैसा वैसा किया. अगर उसने नहीं दी ना, पूरे कैंप को लेके डूबूंगा. खुद भी डूबूंगा, पूरे कैंप को लेके जाऊंगा. Your Grace, my nephew has returned from his mission. It seems you played your part in the taking of Marine, Asher Forrester. Did you run into any trouble? नहीं. Reports from the battle are muddled. Perhaps you can clear them up. Well, my time is short. You have your city, Your Grace. I'm here to talk about our reward. A sellsword to the bone. But you are a man of your word. हाँ, चल अभी तू भी बन. तेरे man of woman. I hear you know how to follow Word of your woman. Despite your friend's efforts to make you stray. हाँ. You told me Asher was a man of integrity, Malcolm. Now I know you were telling the truth. चल बोल मत कर. मैं तेरे चंगुल में नहीं आऊंगा. मेरे को तू आदमी दे मेरे. ठीक है चल. मेरे को रिवॉर्ड दे मेरा. आदमी दे जल्दी फटक से. Unfortunately, I cannot spare my second sons. What? But Your Grace, the mission was a success. I need every soldier to hold Marine. This is why you denied me my revenge? What did I tell you?
You promised me Croft and his तूने बोला था मैं गेम बजा दूंगा. Which is why I'm not going to let you leave here empty-handed. तो In truth, we are not so different. We're both far from home. We've both suffered the loss. मैं गेम बजा दूंगा तेरी, मैं तेरे को भी मारेगा सब इधर लेके खुद भी मारूंगा. मैं खुद भी जिंदा नहीं क्या चलेगा. You said something about not leaving empty-handed? Don't make me change my mind. मैं गेम बजा दूंगा. मैं पहले I बोल cannot give रहा you हूँ. my cell swords, but I will give you the next best thing. अरे तेरा ड्रैगन नहीं चाहिए रे मेरे को. ये क्या है? पैसा वैसे नहीं चाहिए. नहीं चाहिए मेरे को. तेरे पास रख. मेरे को बंदे This चाहिए. gold will be of use. मेरे को फाइटर्स चाहिए. But we need fighters now. फाइटर चाहिए. गोल्ड का क्या करूँ? Gold डालूँ can अपने buy अंदर. many things. A sellsword like you should understand that. ये भी है. A new day is born in Marine. The slaves have thrown off their collars. There are fighters among those who used to be bound. On behalf of the Foresters and the Branfields, I thank you. See that you are ready when I return to Westeros. I have तेरे other लिए plans for you, Malcolm. Plans for me, Your Grace? Plans that will help House Forrester, I hope. I would like you to stay and अरे serve. घंटा है. I have a task. घंटा. I am humbled. अंकल इधर तेरी गेम बजा दूंगा. अंकल इधर रुका ना तू तेरी गेम बजा दूंगा. ये अंकल डबल गेम कर रहे हैं अंकल. I am honored you would ask me. हाँ. Might I discuss it with my nephew first? गेम बजा दूंगा. नहीं तू मेरे साथ वापस चलेगा. वो बिस्का ने मेरे लिए सब किया और तू इधर इसके लिए रुकेगा. Seriously consider staying in Essos? हाँ. I'm not sure. This is all rather sudden. तू इधर रुक नहीं सकता. We'd want Daenerys Targaryen on our side. You've made a good start with her. I could strengthen that bond. नहीं मैं ट्रस्ट नहीं करता उसको. A word, Uncle. मैं ट्रस्ट नहीं Not करता. without her reasons. She did it once. जो भी उसका है उसको पहले बोलना चाहिए था. नहीं. But this alliance might be worth the risk. नहीं. अंकल तेरी ठरकीपना मेरे को दिखाई दे रही है. तेरे को वो पसंद आ गई है. तेरे को उसको तू पसंद आ गया है. मैं तेरे को यहाँ पे रुकने नहीं देने वाला. The little queen is right. Marine holds plenty of killers, and I know the worst. So what are we waiting for? Let's go get them. I don't know, Asha. They're not like us. To them, killing is a sport. It's fun. Let them have fun with the White Hills then. As long as I kill them, I don't care. डबल फन करा था मैं. टेंशन मत ले. मैं डबल फन करा था ना उनको. I must talk further with the Queen. ए मैल्कम तू मेरे साथ चलेगा. Get yourselves killed. ये मैल्कम ठरकी है अंकल साला. क्वीन पसंद आ गई साले को. रुकने की बात कर रहे. Guess? I'd say they'll be trying to live like चल रे इसका उसकी भी गेम बजा के आएंगे. देखो जिसकी गेम बजा थी ना उसकी भी बजा के आएंगे. चल तेरे उसके इस नल्ली के लिए मैंने तेरी गेम बजाने के लिए रोकी उसकी. चल वापस बजा के आएंगे. टेंशन मत ले. तेरा बदला लेके रहेंगे. ये इसने तो सोना दिया है. सोने से मैं फाइटर खरीद लूं. मतलब काम इसका मैं करूं. मेहनत भी मैं करूं. और उसके बाद मेरे काम के लिए भी मेहनत मैं करूं. जबकि वो मेरे को दे सकती है पर वो नहीं दे रही है. वो बोल रही जाके मेहनत करो. भाई ये कैसी बात हुई? डील थी भाई. वो उसने प्रॉमिस निभाया नहीं अपना. अभी आए गैरेट भाई साहब. वो मलहम पट्टी लगाओ दीदी. वो मर जाएगा नहीं तो इधर. It's getting worse, isn't it? We're only about a few days out from the Antler River. We cross a bridge the first men built. And from there, we can try to find the North Grove. Right, Sylvie? We're not going north. We're going south to join Mance and the rest of the free folk. But look... That was always the plan, मैं साउथ नहीं जाता. I go south. मेरे को साउथ पे जाना Nice है. to have my head. Better than losing it to a White Walker. Sylvie, he's come a long way. He knows what he's doing. Does he now? ए तू तेरा काम कर नहीं तो इधर ही गेम बजाऊंगा How तेरी did my भी. brother get that gash in his arm? उसने लिया जो What does that have to do with the... Hush, Cotter! I'm asking Fishface here.
हाँ फिश फेस उसने उड़ते तीर लिए थे. Sylvie! Don't Sylvie me. I want to hear it from him. Some wildlings. Free तेरे से folk. Mistook Cotter for a crow. Can't imagine why. We tried to reason with them and, well, things got out of hand. Out of hand? हाँ. From the look of him, he was nearly killed. तेरे भाई ने उड़ते तीर लिए थे उसको समझा. You don't belong out here. Sylvie, I've known Garrett a while now. He बदल may गए not be सीधे. one of us, but I trust him. I've been waiting months for you, Cotter. And when you finally come home, सुनो तो it's with तेरी some बहन जाओ crow. मेरे को घंटा You नहीं can फर्क barely पड़ता build a जाके fire. मराओ अपनी जाके मेरे को नहीं चाहिए तुम लोग. We don't need हाँ to हाँ die ठीक है for ठीक है. him. Well, we've made it this far, haven't we? Getting here was the easy part. ये तू जाना तेरे को कौन आने को बोल रहा है यहाँ पे. निकल The तू further ले north you और go, the लेकिन more निकल. likely you'll never come back. It's just not worth it. Once Cotter's fit to travel, we head south. With or without you, Garrett. ठीक है चल. Sylvie! You need to rest. And we'll be wanting something to eat. I won't go far. एक क्वार्टर इसको समझा नहीं तो मैं अकेले जा रहा हूँ. Don't be angry, Garrett. This isn't what it looks like. I can explain. क्या छुपा रहा है जल्दी बोल. First I find out you're a wildling. Now you've got a sister. What पहले else are you हाँ पहले hiding? तेरी पूरी कथा सुना मेरे को. Thing! तू कौन I है? swear. जल्दी बोल. I thought she could help. Sylvie knows these woods better than I do. If anyone can find the North Grove, it's her. And besides, पर वो चलेगी नहीं ना तेरी बहन. छोड़ो तो है बहुत. I won't do that. Not again. Then convince her to उसको go with मना. us. She's your sister. हाँ Well, मना. maybe she's right. Maybe you don't belong up here. You don't Huh? mean that. So that's it. हे क्वार्टर. I can't head north एक without a मुक्के में guard. गेम जाएंगी समझा. I किससे go बात कर where रहे she देख. goes. I'm अच्छा. sorry, Garrett. सॉरी गेम बजाओगे इधर तेरी. तेरी गेम बजा के जाते तू. Garrett. You and your sister, you don't look much alike. हाँ. White hair and... I know where you're getting at, so you may as well just say it. I just wondered. She was born like that. My mother used to call her Little Moon. The rest of our village thought she was a bad मेरे को omen. इसकी गेम ये धोखेबाज सी गेम बजाने का मौका दो ना. गेम ऑफ थ्रोन्स इसकी मारने का मौका दो ना. Let's कब just से say किसकी I'm नहीं glad मारी. to वो be धोखा different. दे रहा है यार. Why didn't you just tell me the truth? That you came here to find your sister. I wanted to. नल्ले. I झूठ didn't बोला. think you'd understand. I couldn't risk it. I'm sorry. So you really won't take me north? I want to help you, Garrett, I mean it. But I can't leave her behind. And besides, north of here, I'd be as lost as you. सारे सवाल ये लोग पूछवा के रहेंगे मेरे से. लो भाई लो Why बारी are बारी they लो. afraid of your sister? Same reason you southerners call us wildlings. Same reason you put up that wall to keep us out. People are arseholes. तू भी उनमें से एक ही है भाई. What happened to your village? Did you leave? And not by choice. When Sylvie reached 2 years, they told my mother we weren't welcome anymore. She wasn't welcome. I guess they all hoped she wouldn't survive long enough to get a name. But she's tough, Sylvie. No way she wasn't gonna make it. Where's your mother now? ऊपर गया. Still back at the village for all I know. अच्छा जिंदा She जिंदा. tried to send my sister away. शायद बोल रहा है वो भी. Furs and everything like a good mother would. I left that night when I heard. चल अभी तेरा हाथ How's your कैसे है arm बोल. feeling? Decent, I'd say. Why'd you ask? Oh, you mean this one? Yeah, it's shit. एक चमाट मारने दो ना इसको.
I'll be fine, Garrett. You don't have to keep looking at me like that. मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, तू मर जाए इधर कूदते ऐसे आग में जला तेरे को तो के पास इधर जाऊं अभी मैं कि बहन से बात करूं क्या? सब देखता हूं, रुको. Wonder if her mother gave her that. और क्या है यहाँ पे देखने लायक? Little moon. और भी कुछ है क्या? दिखाओ भाई दिखाओ, और क्या है? ये भी है क्या? Oh, well, it's not so bad. और क्या है? और क्या है? और पीना है क्या? अरे भाई इधर देखना. हाँ. Oh, this is that stuff Cotter was drinking. आओ भाई कॉटर को देते हैं. नहीं चाहिए इसको तो मैं क्या करूं? इधर अंडे दूं? मेरा क्या काम इधर? अंडे दूं क्या इधर? Don't know why you'd want this around. चलना भाई, निकलना नॉर्थ को. क्या इधर फालतूगिरी कर रहा है इनके साथ? नल्ले कुछ नहीं करेंगे तेरी. नल्ले नल्ले डरपोक है लोग. ये क्या करेंगे? एक एक चाकू घुसा दे दोनों को, इधर ही मार के जाता हूँ. मेरा तो मन कर रहा है. इसमें अगर इन्होंने कसम से ऑप्शन दिया रहता ना कि तुम तुम्हारे मर्जी का करो, तुम्हारी मर्जी से स्टोरी आएगी, इसकी गेम तो पहले बजाता मैं. सबकी गेम बताता माँ की. सबसे लड़ता, सबसे उड़ते तीर. और इन्होंने अभी स्क्रिप्ट ही ऐसे लिखी है कि मेरे को स्क्रिप्ट में भी क्या ही बोले भाई. पर मजा बहुत आ रहा है. मेरे को तो मजा आ रहा है, तब मजा आ रहा है. पर इधर मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ? क्यों उछल कूद कर रहा हूँ मेरे को ये नहीं पता है. हाँ क्या करूँ मैं? क्या करूँ यहाँ पे? क्या करूँ? मर जाऊँ यहाँ पे? तो सुसाइड कर देता हूँ. अरे क्या करूँ इधर घूम के? क्या करूँ इधर? चक्कर पे चक्कर कटवा रहे. इधर कुछ देखने की जगह है क्या यहाँ पे? भाई कुछ देखने की जगह ही नहीं है. क्या करूँ यार रुक के? नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, तो क्या करूँ? अरे तो करूँ क्या? अबे क्या करूँ? इधर घूमते रहूँ क्या? अरे क्या फालतूगिरी आ रही गेम की. ये भाई करूँ क्या? ए कॉटर करूँ क्या मैं इधर? अंडे दूँ? अरे करना क्या है? तो कुछ ना कुछ देखना होगा इसको फिर से. अल्ले वो ए गैरेट भाई क्या करवा रहे हैं? करना क्या चाहते हैं? बोलना. हाँ खरगोश चाहिए. खरगोश की गेम बजा रही है. Fucking hell. Could you have been any louder? Sorry. गेम मजा होगा तेरी. तेरे को काट के खा लेता हूँ. Never met a crow before. Sorry I almost killed you. Might have done you a favor though. Plenty of things want to kill a crow up north. Giants, thens, shadow cats and ice spiders. And the white walkers, of course. A spear sounds nice after all that, doesn't it? They can try to kill me if they want. I won't let them. I'm sorry. But आजमा that's के the देख ले. dumbest thing I've ever heard. आजमा के देख लेना. इधर गेम बच जाएगी तेरी. इतना एटीट्यूड. हाँ अरे इतना प्यारा सा खरगोश है, उसकी गेम बजाने पे तुले. It's my turn. मैं करता. हाँ ये देख. जब देख अभी कैसे मारता उसको. You're not going to shoot me in the leg, are you? Never miss. तू नल्ली होगी, मैं नहीं हूँ, ठीक है? अब देख कैसे मारता हूँ. चल रे कैरेट, दिखा इसको अपना टारगेट.
Touch and hold to drawback release to fire. I never miss. अरे समझने को टाइम, अरे चिप करना है, समझने को टाइम गया। अरे पहली बार गेम खेल रहे, समझने को टाइम तो जाएगा। ले 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 ले, अभी समझ गया मैं। ले लेना, इधर लेना, इधर हाँ, इधर ले हल्का सा। तब तेरी माँ किया क्या मिस? बोल ना, नट नट, अभी नट, अभी नट, नल्ली। अरे It's not much, but it'll last us. I never miss, समझी गया? I never miss। सीधा हेडशॉट लिया, Could come in handy. सीधा हेडशॉट लिया, सीधा हेडशॉट। You ever lost anyone, Garrett? Someone you really cared about? Someone you thought you couldn't live without seeing ever again? अरे फैमिली को उसने मारा था मुझे। Like? I lost my family. First my mother, then my sister and father. So you know how it feels. Carter and I, we lost everything too. हो गया। And we nearly lost each other. I didn't think he'd make it back this time. मैं लेकर आया And I उसको, won't ठीक risk है? losing him again. मैं लेकर आया Not even हूँ। for Thank the you बोल, North thank you। Grove. मैं लेकर आया हूँ। You know something about it, don't you? Only what I've heard. But don't get your hopes up. It's not worth it. Do you know where it is then? I know where they say it is, but you'd be mad to try and go there. बता तो सही किधर है मेरे को जाने का है। तू तेरा काम कर, मेरे को बता कि मेरे को जाने का, मेरी मर्जी, मेरे को जाना A जाना few है। years back, हाँ one बोल। of the Ice River clans set out to find it. They'd heard stories that the cold couldn't touch it, that it's safe even in the dark of winter. So they'd set out, all full of hope, and none of them ever returned. That won't happen to us, Sylvie. I was sent to find the North Grove. That doesn't mean that you'll... Help! करो भाई करो, हेल्प करो सर की, कॉटर भाई की। Carter! कटर। Sylvie! Harry! Get back! अरे कौन है बे? अबे बहुत मनुष्य शक्ल है ऐसा। क्या कितनी मनुष्य शक्ल थी बे वो। शी ऐशर का विषय देखते क्या है? This is definitely the place. So, who are we dealing with exactly? Pit fighters. 2 go in, 1 comes out. Day after day. No rules, but kill. Anyone who can survive that is capable of anything. They're crazed savages. भाई बड़े येड़े दिमाग के, 2 बंदे अंदर जाएंगे, एक मरेगा, एक अंदर ही रुकेगा। जो रुक गया वो बहुत ही स्ट्रांग है। You can convince them to fight for you. And that's not going to be easy. Don't expect to charm them or reason with them. You were a pit fighter. If they're anything like you, we'll be just fine. Understand, they are nothing like ठीक है, me. चल These aren't soldiers. They're animals you unleash. करता नहीं मैं। एक आदमी से बात करा, बाकी मैं पटाता है उनको। Must make you feel pretty good, seeing the masters overthrown. They're not gone. They're just on their knees. And when they get back to their feet, they'll be more dangerous than ever. गाइस कैसी लाशें पड़ी हुई है रे, लिटरली मार देते जान से ये लोग। You did what? सर कटे हुए बे। रे कैसा मार रहे बे? What the fuck? Trust me, you don't want to get involved, Acha. कैसा मार रहे देखो ना भाई। रप्पा रप रप्पा रप। Your friends have been busy. Let's hope our heads don't end up here. भाई सर्वर काट के रखे हुए। जाड़े को देखो बाप One रे। last thing. They're not fond of strangers. Or anyone who shows weakness. Or fear.
Or really any highborn pricks with lily white सुन asses सुन like तू you. तू आगे जा Maybe तू they should आगे see जा a familiar face first. पहले तू जा मैं पीछे They जाता हूँ don't like us coming here uninvited. It will hardly matter who they see first. तू जा फिर भी तू आगे जा तू वही इधर से निकली भी है Well, if it isn't Beskar, the fucking basilisk. We just want to talk to Amaya. You can, but not this one hiding behind your skirt. Hiding? You got to the count of 3 to turn around and walk away. 1, 2. थोड़े पंगे लेता हूँ गाइस तब तेरी तब थोड़े उड़ती तीर गाइस उड़ते तीर लेता था थोड़े I like this one. ले लिया गाइस उड़ते तीर Hey, Amaya! Company! उड़ते तीर ले लिया गाइस हम देखेंगे कैसे होएगा या तो मेरा सर उधर आएगा या तो इनमें से किसका या तो अपन हंसी खुशी इनको लेके जाएंगे अपने साथ Is that a pit? Yeah, some masters couldn't get enough of the fighting, so they built their own private pits, where things could get really nasty. अरे जानवर है बे ये लोग सही के क्या करूं मैं और मैं क्या करूं इधर That's Amaya. Keep your cock in your pants, little brother. She's likely to chop it off. अरे अरे Well, hello there. Not many people get past the beast. You must need something very badly. So, out with it. Before I decide not to let you leave. I've come with an offer. I think it's one that'll interest you and your men. If you wanted my interest, you wouldn't have shown up with her. Amaya, please. Please what? I had a friend once. इसके the साथ थोड़ा Basilisk, सा but she died a long time ago. I earned my freedom. You walked out on me. On all of us. Fighting side by side, we were goddesses of the pits. मेरे से डील करना उसको छोड़ You have a problem with her? Deal with me. So, what is it that you want? Why shouldn't we rip you to pieces and feed you to the beast? एक लपड़ में सो जाएगा मोटे रुक इधर तेरे को भागा भागा के मारूंगा नहीं तो संभालता है तू बिग सा टेंशन मत ले मेरी या तो मेरा सर कटेगा या तो इनमें से किसका है तो मैं इनको पटा के लेके जाऊंगा My patience wears thin. My enemies in Westeros are powerful and bloodthirsty. Worse than your masters ever were. I need fearless soldiers to crush them. You think we sell swords? We don't fight other people's wars. We are pit fighters! Artists who paint in blood! That was yesterday. The fighting pits have been closed. रुको मैं भी लाएगा मैं भी रुक Free to do what you want. हाँ Don't you see that? Yes. मैं भी लाता We are रुको free. रुको Why रुको would रुको we follow another? तो रुकना We मैं भी don't डालता have masters anymore. Why would we follow anyone ever again? The life you've led here is over. I've met the Mother of Dragons. She won't open the pits again. If you want to fight, we offer gold and glory. Amaya, कुछ नहीं हुई trust me. He's got enough gold for all of you. बहुत सोना है You अंडा want to lead pit fighters? Yes. You have to earn their respect first. ठीक We है don't देता ना मैं know who you are अच्छा until we see you bleed. ठीक है You're लड़ने gonna have to गए show them you can fight. All right. Who? आजा लड़ बीस्ट को How ला about the belly here?
अरे तेरे को कुत्ते कैसे भगा भगा के मारूंगा, चल तेरी तो चल। ऐसा एक मुक्के पे तेरा नाक फूटा साले जाड़े। अच्छा आंधे, अरे आंधे डरता नहीं मैं, इसको नडू I've never गाइस। seen him before. Take a good look then. He's the man who's going to kill your boy. And if I beat him, you and your men will join me in my fight. If you can beat Bloodsong, you'll gain our respect. चल But no one has ever beat him. अरे इसको फूक मार के उड़ाएंगे। अरे मैं तू देख अभी, तू देखो गाइस, इसको फूक मार के उड़ाता। So what are you टेंशन मत ले। supposed to be? With your little axe? अच्छा Your pretty blonde beard. भाई ऐसे बड़बड़ करना ना, वो मुंह बंद हो जाएगा। Then fight you. अच्छा Thanks for noticing the beard. Well, come on. और थूक ही निकलेगी, जब एक मुक्का मारूंगा ना थूक निकलेगी पूरी। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। Yeah? You have a dying wish? This ought to be good. Will you return to Westeros and kill as many Whitehills as you can? ठीक है, अगर मैं इनके जिंदा नहीं लौटा। No. हाँ? I'll spend all your gold on the finest of whores. Hey! I need those! You'll fight with the weapons we give you. ठीक है चल, डरता नहीं मैं, कुछ भी तो डरता नहीं। गाइस इसको देखो कैसे लड़ेगा मैं। You all see this cockless Westerosi? He's come to order बेटा हम बोलने वालों में से नहीं, करके दिखाने वालों में से। I kill no man because another orders me to. I kill a man because it pleases me. Let me show you how we dance in Marine. You fight dirty. I like that. Choose a weapon and try not to die. Only one of you leaves the pit alive. May the best fighter win. The best would be me. चल ले, कौन सा वेपन लेने का? कौन सा वेपन लेने का? बिस्का कौन सा दे रही है? बिस्का कौन सा दे रही है? कोई भी दो रे। चल लड़ेंगे, चलो चला गाइस। 1v1 का फाइट है, अली ने दो तुमको इज्जत में। 1v1 है गाइस, सीरियस हो रहा मैं अभी। चला नट आजा ना मेरे बेटे, चल। Are you ready? चल बातें बंद कर, चल तेरी माँ क्या। चल ए बड़बड़ कम करना, मारा मारी करते ना। अरे निस्ता बोल बच्चन। We cannot let the crowd go wanting. I think I can actually. निस्ता बोल बच्चन है तू करने का कुछ नहीं, बोल बच्चन है बस। बोल बच्चन है तू, देखो बोल रहा ना तू, बोल बच्चन है, बोल बच्चन। तेरे कुछ भी दे दे, डरता हो क्या मैं? चल अरे तेरी तो। Would it help if I stood still? Maybe. Come on. चल साले, चल तेरी तो। हट निकल। अरे तू बोलने का है रे मेरी जान, तेरे को 2 सेकंड में लूंगा। देखो 2 सेकंड में लिया, ढेर है ना। चल वे नल्ले, निस्ती बड़बड़ है तू, निस्ती बड़बड़ है रे तू। Still smiling after I break your face. Surprised you can lift it. तू उठा भी सकता है क्या उसको? नल्ले, अरे यार लकड़ी जैसा तो तू है, बड़ी बात है। पूरी जान लगा दूंगा इसको, हराऊंगा 1v1 में। नट साले नल्ले। ले चल नल्ले लुखे, निकल। हाथ से डर रहा था मैं तो, आना लेना मुक्के पे। Don't hold back. Don't intend to. Look at this terrified boy. He fears his end. अबे चल बे नल्ले।
देना ऑप्शन तो दे कुछ करने का। ये तो गेम बताऊँ लुखे ले ले नट 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 नल्ले नट 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 चल तेरी तो चल लुके बड़ बड़ बोल बच्चे निकली क्या हवा निकली क्या सारी निकल आए हवा। थैंक यू गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गेम पे फोकस चल साले चल बट बड़ बड़ ले नल्ले। अब क्या बोलेगा बोलना शांति क्या। थैंक यू 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 थैंक यू। Kill him! Stick the little man! Do it! Let him go! Everyone is. Where I come from, we don't kill people for sport! मैं नहीं मारता रे रिस्पेक्ट कमानी ना गाइस तो रिस्पेक्ट मार के कमाई नहीं जाती। The masters who once held your chains decided who lived and who died. But as you can see, I'm not here to be your master. रिस्पेक्ट मार के नहीं कमाई जाती I गाइस। chose you for a reason. You're true warriors. Warriors I admire and respect. You deserve better than this. You deserve more than to die for someone else's entertainment. Glory and gold. Fight with me, and you will have glory and gold. Gold. If you've got the balls to follow me, we will set sail at dawn. And to those too craven to join me, to hell with you. रिस्पेक्ट मार के कमाई नहीं जाती गाइस। रिस्पेक्ट कमा के मार के नहीं कमाई जा सकती। अरे ये नल्ली है यार तू पीछे हटना एक मुक्की में ढेरे हो। Over here! Over here! अरे कैरेट मारना उसको लेना खत्म कर उसकी गेम। अरे नल्ली पाओ अरे कैरेट मारना क्या कर रहा है ले इसकी तो नल्ली पाओ बोला ना। अरे 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 डेंजर है बे मरी नहीं एक चाकू में। नट 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 डरने का नहीं नट तेरी तो चल बैक। अरे बाप रे दूसरे चाकू में भी ढेर नहीं हुई। भाई दूसरे चाकू में भी ढेर नहीं हुई भाई डेंजर थी। Get it! Help Sylvie! हाँ जाता हूँ टेंशन मत ले। Why won't they die? We need fire! It's the only way! अरे चल नल्ली उठा ना जल्दी। अरे उठा हो इतनी में अबे चल बे पीछे देख कैरेट पीछे देख। खलास बाय बाय गेम ओवर। अरे बाप रे कितने सारे बे They're everywhere! सबको मारू क्या। We make for the North Grove. We need to stick together. चलना ही पड़ेगा ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। Run! Now! I hope you're right about this, Garrett. हाँ टेंशन मत ले मैं हूं ना। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा तुमने साथ निभाया तो तुमको कुछ नहीं दूंगा इतना मेरी गारंटी है। ये मीरा वाले टॉपिक पे मैं फोन छोड़ देता मेरे को इस पे पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं। है क्या
Grace. You're familiar with my brother's chambers, aren't you? कौन है वे? Certainly you've been here before. You looked rather confused when you came in, as if you didn't know where you were. No, Your Grace. No? No. I'm told you know these chambers as well as anyone. No. You're quite the curiosity, aren't you? You made it clear your loyalty was with Lady Marjorie. Yet now you hardly serve her at all. Have I displeased you, Your Grace? I've heard things. I understand you've been quite busy. Tell me, do you consider yourself an honest, loyal handmaiden? One can never tell with you northern girls. Assuming an honest person exists in King's Landing. It only matters what you think, Your Grace. Don't try my patience. तो क्या कर लेगी? In sincerity. तू भी आ रही, तू भी 1v1 आ, तेरे को भी मार के डेर कर दूंगा। गाइस इनको बहुत एटीट्यूड है, सबके एटीट्यूड निकालने की इच्छा है मेरी तो है। सबको 1v1 लड़ूंगा, नीचे ढेर होंगे, कुत्ते ऐसे सड़ेंगे नीचे। मतलब कुत्तों को कुछ no offense with the dogs. मतलब reference समझो ना feeling It हो। can't have been easy. Or at least it shouldn't have been. I meant no harm, Your Grace. I had a personal matter to attend to. A personal matter? मेरे पर्सनल में इंटरेस्ट मत ले। हाँ किया, क्या कर लेगी? Using people to get what you want. हाँ किया, क्या कर लेगी? Good. Why would you be so reckless as to risk your neck for what? It all seems rather careless, considering the consequences. My family is still very much at risk, Your Grace. It was crucial I attend. Your family. Sometimes that's a convenient lie we tell ourselves. When I suspect your issue with Lord Andros played a part in it. You've been such a busy little handmaiden. I assume Lady Marjorie knew nothing of this. No, Your Grace. This wasn't the first time you've hidden the truth from her. You've no qualms about lying to her, have you? Tell me the truth. Your secret is safe with me. Only when I must, Your Grace. I think we both know it's more often than that. Perhaps I mistook your northern stubbornness for ignorance, but now I see there's more to you. You're a cunning girl, and perhaps you can help me. You're quite friendly with my brother Tyrion. I need you to speak with him before the trial begins. I want to know who he intends to call as a witness on his behalf. Consider it a favor to the crown, for which we will all be grateful. And if I refuse, Your Grace? Refuse? And be branded a traitor like my brother? I understand, Your Grace. लेना वाले हैं उससे। Be a useful little bird to me. अरे उससे आर्मी वगैरह को डिमांड करेंगे ना भाई, तू काम तो निकाल। I'll take care of your problem with Lord Andros. चल। Thank you, Your Grace. हो गया काम 25। एंड्रोस को संभाल रही है। Anyway. बस। And I doubt anyone will miss him. ठीक है, अपना काम कर रही तो फिर करेंगे ना। पहले बोलना था ना, मैं आर्ग्यू नहीं करता। पहले बोलती थी सीधा सीधा हाँ बोलते तब विषय क्लोज। अभी तक तेरा काम 25। क्या मैम, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट रखो ना बात को। अभी रॉड्रिक का विषय देखते क्या? ऐशर है क्या? You think we hired this boat for nothing? I don't know. That was a rousing speech you gave, little brother. Little brother, huh? Hey, Biksha, I mean, मत बन, तेरे को ही They बनवाने say नहीं your का। homeland is fat and prosperous. An orchard ripe for plucking. We'll take what we want and kill anyone who stands in our way. Take anything not nailed down. Just मेरे not घर से from my नहीं। house. बाकी किसको भी नड़। That depends on how nice your house is. I'll show them their beds. I'll be there in a moment. I'm surprised to see you here. You denied me an honorable death, so I must find one in Westeros. देखा ना ये मतलब Vesco wasn't exaggerating. रिस्पेक्ट कमाई जाती है। वो लोग कैसे इज्जत से है रिस्पेक्ट में। Anrath will be glad of your return. You came through for them.
just as I knew you would. What does Daenerys want from you? She has a mission for me. But beyond that, she's told me nothing. If I can, I'd like to help her reclaim the Iron Throne. Imagine what an ally she'd be to House Forrester if she succeeds. Living here has made a better man of you, nephew. Perhaps the same will be true for me. You don't know what your queen is going to do. You're turning your back on your family when they need you most. I'm sorry that you feel that way, Asha. But I've made up my mind. I'll send a raven ahead to Ironrath. अरे नल्ले ठरकी बूढ़े सुधर जा तेरी उम्र देख काय को रानी पे जा रहा है. My thoughts will be with you in the fight to come. Asha. Iron from ice. तू निकलने नल्ले. How about fire and blood, Uncle? Isn't that what the Targaryens say? Casting off! इसको मार के आता साला धोखेबाज. ठरकी है साला रानी के लिए रुक रहा है. Take this. It'll help loosen his tongue. But be careful. He's a tricky little bastard. If he figures out who sent you, he'll tell you nothing. I'll be listening to every word you say. चल बे डरती नहीं मैं तेरे से चल. मतलब मीरा. I ask for brawn, they send me a handmaiden. Well, you're here. You might as well come in. Let me guess. Your family is in grave danger, and you've come seeking my help? Not that I'd be of much use to you. As you can see, I'm at a bit of a disadvantage. I really must speak with you, Lord Tyrion. Clearly. You're here, aren't you? At least you brought wine. And you didn't even have to hide it. Doesn't smell poisoned. Poisoned? Cersei would love nothing more than to save herself the trouble of a trial. You don't expect me to drink alone, do you? They never let anyone in to see me. You go first. Some things are worth dying for. So, why are you here? It's rather unusual for a handmaiden to visit the Black Cells. Willingly. I've been worried about you, Lord Tyrion. Oh, have you? You may be the only person in all of King's Landing who doesn't want to see my head on a spike. You and Podrick. I have to admit. इसको डाउट आ गया, इसको डाउट आ गया, गारंटी. पूछा नहीं अभी, इसको डाउट आ गया रहेगा. One might imagine. 100% इसको डाउट है. This is all a ruse, isn't it? Sorry? देखा, बोला You're था ना. coming here. We both know you have an ulterior motive. You've come to set me free. It's the perfect plan. No one would suspect it of you. I'm afraid not, unfortunately. Unfortunate for us both. अरे कितनी दारू पेगी बस करना. So, दोनों भी पागल है. Cersei sent you, didn't she? नहीं. I know I'm not wrong. I don't know what you're talking about. मैंने बोला ना ये होशियार है. The gods have never let anyone in with wine. That was your first mistake. Not that I don't appreciate the gesture. I wish you had the courage to tell me the truth. Not that I'm above drinking her wine. I told you to be careful. He'll twist your words. Stupid girl. You're acting a fool. Let me handle this. We're not done talking. You heard the girl. Go. चला कह दिए फिर भी इतना रुबाब घो. हाँ? What did my sister expect you would learn? साले. Who will testify on your behalf? She's using you, and will continue to do so.
until you no longer prove useful. मैं उसको use कर लूँ, पागल. If that's what you think, then you're more foolish than I thought. She's taking care of a problem for me. Cersei is not someone to be trifled with. बराबर है, उसके खुद को भाई को जेल में डाल दिया. Make of your new friendship with my sister. I doubt she'd be pleased. Assuming she doesn't मेरे को फर्क नहीं पड़ता. To be honest, I don't care what Lady Marjorie thinks of me. मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. I thought you were smarter than that. Without her protection, you're in a very precarious position. अरे डरते नहीं रे मैं. What should I tell Cersei? You're a clever girl. I'm sure you'll think of something. Although I would suggest you choose your words carefully. Cersei will be far less amused if she catches you in a lie. I have to give her a list of names. Tell her I'll call Shagga, son of Dolph from the Mountain Clans. Oh, and Timid, and Chella, and the Scepter who raised me, assuming she's still alive. Enough of this nonsense! You're wasting my time. Out! Now! I wish you well, Lady Mira. Be careful. ये भी गेम खेल रहा है, शब्दों के साथ गेम खेल रहे हैं सब. गैस किसको ट्रस्ट करे? इसकी बहन को ट्रस्ट करे, इसके नल्ले को ट्रस्ट करे? गेम मेजर है, दिमाग से खेलना पड़ेगा. रॉड्रिक भाई साहब नशे में धुत है. Must you leave? देख रहे हो? Didn't mean to. देख रहे हो भाई ठरक? You didn't sleep, did you? Neither did you. अब जो भाई के. We haven't slept much at all these last few weeks. I hope you don't have any regrets about this. Guys, 18 प्लस हो सकता है. रुको तुम लोग रुको. 18 प्लस हो सकता है भाई. 18 प्लस हो सकता है. मेरे को हाइड करने दो. माँ क्या चैनल जाएगा पूरा. गेम साउंड भी बंद कर रहे तो कुछ भी हो सकता है गाइस. देखते क्या ट्विस्ट है. सब बंद ना. हाँ भाई गेम बच जाएगी भाई. नहीं तो समझो बात को समझो. शादी करवा रहे हो उसकी. शादी हो रही है इस. कुछ नहीं हुआ. 18 प्लस टेंशन मतलब कुछ नहीं हुआ. नॉर्मल कन्वर्सेशन ही हुई थी. 18 प्लस कुछ नहीं हुआ. टेंशन मतलब. I was having nightmares, so I. Go on, Talia. I went back there to the grove, and someone was there. What do you mean? मैं इसकी बहन पे भरोसा नहीं करता. This is a report. How many fighting men we have. Where Griff and the Whitehall garrison are being held. It even talks about Elena. I know. It's everything. I couldn't believe it. If I hadn't seen it with my own eyes. Talia, where did you get this? The man I saw, he stashed it in the knothole of an old stump. Like he'd done it before. Talia, I need to know who it was. He's like family, Roderick. But it doesn't matter. He's a traitor. He endangered our house. You have to deal with him like you would any other man. I'm sure he had his reasons.
but no reason is good enough. It's your duty to tell me, and mine to pass judgment. Just promise me you'll kill him, Roderick. Anyone who would betray us like this deserves to die. I'm asking you as your sister. I'm lord of this house, Talia. It's my job to deliver justice, not vengeance. I can't promise to kill a man before I've heard him out. You know what he's done. That should be enough. Talia, please. Come with me. He's in the Great Hall. गेम मजा रही है, बहुत बड़ी गेम खेल रही है इसकी बहन। मैंने सुना था ना गाइस, ये हंस के बात कर रही थी उससे, मैं पूरा गारंटी है धोखे दे रही है। इसको कैसे पता? इसने वो बंदे का, रुको गाइस रुको, मैं तुमको बाद में कंक्लूजन दूंगा एंड ऑफ एपिसोड। मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं उसके हिसाब से गेम लेता हूँ, अभी एंड में तुमको कंक्लूजन देता हूँ मेरा। अभी देखते हैं क्या विषय होता है। चल चल चल, डर मत रॉड्रिक, चल। Go get the guards. डर मत रॉड्रिक, अपना ही बंदा होगा कोई। कौन है ये? पीछे उड़ना भाई, कौन हो? तो शक्ल तो देखे आपकी। Hey? Oh, my lord, you scared the bloody daylights out of... What's that? You tell me. You don't scare me, Roderick. I've known you since you were a boy. Back when you still had a spine. You sold your loyalty like some whore in the street. My loyalty has always been to this house. But you've been too damn blind to see it. And what I didn't see is that you were a traitor. You pushed me to this, Roderick. You brought it upon yourself. You're blaming me for what you did. I'm telling you what you need to hear. I rose through the ranks because I knew when to ignore orders from men unfit to give them. Look at you, Roderick. You're weak. You're weak. Just like Ethan was. Making Duncan his sentinel. Ethan was a boy. Ethan was a fool. And you've been making fool choices too, since the day you crawled off that corpse cart. Kissing Lud's ring, when you knew we had to show strength. Letting Griff force you to the ground, without a shred of dignity. Going to High Point without any soldiers, despite my every warning. Hell, you even managed to get Arthur killed. Enough, Royland! You've had every opportunity to save this family, but you've squandered them all. Your father would be ashamed. Hate me for it, but it's the bloody truth. So you turn your cloak? That's your answer? I'm not gonna stand by and watch you destroy this family! ये clear नहीं बोल रहा है रे। You're driving House Forrester the way of the Starks. The only thing that matters is that you swore an oath to obey. I swore to your father. I'd swear to Asher if he were here. But you're a cripple who can barely hold a sword. Asher knows how to act. All you do is limp between defeats. Asher would cut your traitor heart out. Oh, I don't doubt it. He has more balls than you ever will. Roderick, it's Griff. He's gone. Somebody set him free. ये है ना भाई साहब आपके? Is this your doing? They were going to ambush you at the trade. I just saved your life. But Ryan... Royland, how could you? This was his doing. Just sentence me and be done with it. Kill me. And Asher dies too. Please, Roderick. What do you mean? I know Lud's plans. Spare my life. And I'll tell you everything. Perhaps we should hear him out. He's only saying that to save himself. You must decide, my lord. You must be loving this, Duncan. Believe me, I'm not. अरे एक सेकंड पॉज तो करो। अरे स्ट्रीम गई क्या? अरे यार काय को कनेक्ट किया है इसको मैं? हाँ किया करे यार। तुम्हें साफ पाल रख।
गाइस आई नो स्ट्रीम हक दिया गाइस प्लीज थोड़ा सा 2 सेकंड दो बस आ जाएगी वापस आ जाएगी आ रही गाइस आ रही स्ट्रीम वापस आ गई गाइस आई एम सॉरी आई एम वेरी सॉरी गाइस स्ट्रीम इज बैक सॉरी गाइस सॉरी स्टेबल होने के लिए 2 सेकंड लग जाएगा गाइस मैं 1 सेकंड चार्ज पे लगा दूं फोन को नीड्स टू बी चार्ज गाइस 2 सेकंड दो बस फोन चार्ज पे लगा दूं बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है मैं सोच रहा हूँ उसको मार दूं या फिर उसको छोड़ दूं गाइस घर में सांप पालना ठीक रहेगा डंकन भाई साहब बोल रहे थे कि उसको छोड़ दो और उससे सुनते क्या बोलना है उसका लेकिन मेरी इच्छा हो रही है मैं उसको मार दूं क्योंकि इसने धोखा बहुत बड़ा दिया है क्या करूं गाइस छोड़ूं कि मारूं इसको यार बहुतों की जान बख्श चुका हूं यार एक इस नल्ले की बख्श लूंगा तो क्या ही जाएगा एशर को कुछ नहीं होगा इतना तो मेरे को मालूम है एशर बच जाएगा डंकन बोल रहा है कि उसको बचा लूं गाइस वी नीड टू मेक एन डिसीजन एक डिसीजन लेना है अपने को गाइस अपने को एक डिसीजन लेना है वी नीड टू टेक अ डिसीजन गाइस अपन या तो ये ट्रेटर है और रॉयलैंड ट्रेटर है या तो हम रॉयलैंड को मार दे या तो हम रॉयलैंड को छोड़ दे और रॉयलैंड धमकी दे रहा है कि अगर हम उसको मारेंगे तो एशर मर जाएगा एशर को मेरे को इतनी गारंटी है एशर मरेगा नहीं क्योंकि एशर एक अच्छी पोजीशन में है रॉयलैंड का कुछ होल्ड नहीं है उस पर डंकन और उसने बोला कि अगर उसको छोड़ देगा रॉड्रिक इसको छोड़ देगा रॉयलैंड को तो रॉयलैंड के पास कुछ चीजें हैं जो कि वो बताएगा और डंकन बोल रहा है कि हम उसको छोड़ दे डंकन हमारा सेंटिनल है क्या हमें मारना चाहिए या फिर उसको छोड़ना चाहिए I'll spare your life. मैं देखता हूँ क्या होता है ए तू जा रहे भाई मेरे को मेरा गेम खेलने दो यार Mira cost Luddy's army. He's desperate to strike back. He's going to ambush Asher the moment he makes landfall. No! You must protect Asher. Protect the true lord of this house. Take this traitor away. Get your hands off me. उसको मार देता था रे कुछ खास इंफॉर्मेशन भी नहीं दी मार देता रे What Royland said. We have to warn Asher. We can't. एशर बराबर है एशर को कुछ नहीं होगा What do we do? गलती की इसको छोड़ के और के लिए प्रिपेयर करो एशर को कुछ नहीं होगा We're going to war. एशर को कुछ नहीं होगा टेंशन मत लो एशर को कुछ नहीं होगा वॉर शुरू करेंगे एशर को आन दो आर्मी रेडी होने दो वॉर करेंगे लड़ेंगे देखते एशर को कैसे कुछ हो सकता है रे मेरे को नहीं लगता एशर को कुछ होगा Almost there, Wesker. Let's have a look. ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं Save your lovemaking for below deck. They listen to you. Barely. But what happens if your lord brother decides he's the one in charge once we're at Ironrath? नहीं कुछ नहीं to होगा follow his orders? Or will it be you commanding them? They don't know him. A lord sounds an awful lot like a master. Doesn't matter if Roderick's lord of our house. These are my soldiers to lead. Huh? You may want to start by telling them your brother's not to be harmed. He hasn't had a chance to win them over like you have. अरे यार करता हूँ ना रुकना यार इधर गेम गाइस बहुत ही चीकी सिचुएशन में आ गई साला सब मेरे पे आ गया गेम थोड़ा सा एशर पे भी यार एशर को कुछ हो तो नहीं सकता क्या होगा एशर को That's odd. Port's quiet. No guards. मैं कोस्ट पे चले जाता था रे Maybe they're कोस्ट पे आ सकते थे अपन Could be. Or could be we'll have a fight. बट हाँ एक बार ये भी तो सकते हैं हम लोग वॉर के लिए जा रहे हैं तो ये सारे जितने भी गार्ड्स हैं कोस्ट पे वो वॉर के लिए आएंगे ना तो एशर के लिए एरिया क्लियर होगा एशर डायरेक्ट हमारे पास आएगा सीधा Oh, this couldn't be easy. हाँ ये भी एक दिमाग हमने लगाया है
देखते हैं यार क्या होगा यार, छोड़ो गेम है, इतना क्या सीरियसली दे रहा हूँ मैं, किया अभी देखेंगे जो आगे होगा, जैसे जैसे स्टोरी जाएंगे लेके जाएंगे अपन, देखते हैं क्या होता है। So this is Westeros. इतने सारे बंदे अपने को थोड़ा ना कुछ होएगा यार, अपन मार नहीं सकते क्या, मन इतना इसको ले लिया अभी, चलो चलो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या अपने लौंडे है ना? Thank the gods you've made it back. I brought you an army, brother. Hope you're ready for a fight. Lord knows you're coming. He sent men to intercept you. We need to hurry. Let's go, guys. अब होएंगे वॉर की शुरुआत, अब होगा असली वॉर। Stuck in a boat for weeks. Could use a good fight. Let's go. What? अरे माँ। Get that gate open. अबे ये कौन है? ग्रिफ। ये क्या हो गया? It's been a while since I killed any White Hills. नड़ो। चल तेरी माँ की है, निकल। अरे बीच टेढ़े क्या? मार सबको मार। ले बीच ले। आई रे इधर डाला रे। Asha, you have to get out of there. Looks like it's up to us. ऐशर उठ ऐशर, लड़ना है अपने को। Raise the gate. They've got us outnumbered. Oh shit. ले रेस कर धर We have to get out of here. जल्दी आओ रे, जल्दी आओ। It's stuck. जल्दी आओ। The gate will fall without one of us holding it. One of us has to stay. तू रुक, मैं जाऊंगा, ऐशर जाएगा। ए तू रुक रॉड्रिक, मैं ऐशर को लेके जाऊंगा। कुछ स्टेज भी है। ऐशर। Asha, come on. नहीं, ऐशर को लेके जाना था। Don't you dare leave me, Asha. नहीं। I came all this way Lord, for you. you must hurry. रॉड्रिक तू रुक। Let me save रॉड्रिक your तू life रुक। and our house. तू रुक I am रॉड्रिक। from Ice, brother. I am from Ice. रॉड्रिक थोड़ा नहीं, ऐशर जाएगा। I'll hold them off. But my lord, you can't. Asher is your new lord. चल ऐशर। My lord. Roderick, go. ऐशर को मैं कुछ चाहिए यार। रॉड्रिक फीका पड़ेगा ये अभी। लड़ता हूँ ना, अगर लड़ पाया तो लड़ता हूँ ना। लड़ पाया तो लड़ूंगा, आखिरी तक लड़ूंगा, ऐसे थोड़ा ना जान दूंगा। चल रहे रॉड्रिक, अपन लड़ेंगे। लड़ते नहीं, चल लड़ेंगे, चल। अकेला एक ही के साथ लड़ेगा। चल ऐशर, रॉड्रिक चल रॉड्रिक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चल। आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चल। तेरा बदला लूंगा मैं। आखिरी सांस तक लड़ेंगे रॉड्रिक, चल उठ जाने तो उठ। क्या है रॉड्रिक, पूरा लगा। पूरा लगेगा इस पर। व्हाट द फक, नहीं गाइस, मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं छठा एपिसोड खेलूं। गाइस खेले आज 6th एपिसोड खेले। गाइस क्या बोलते हो, खेले 6th एपिसोड? मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है खेलने की।
मेरे को अंदर से है ना बहुत उत्सुकता हो रही है खेले मेरे को अभी इतना इतना वेट मेरे से नहीं होगा गाइस, इतना वेट मेरे से नहीं होगा यार। करे खत्म करे, मेरी इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है यार मेरी गाइस, कर देना गाइस। वैसे भी आज ये वाला एपिसोड बहुत जल्दी खत्म किया है इन्होंने, अपन ने स्ट्रीम भी लेट स्टार्ट की थी और एपिसोड भी बहुत जल्दी खत्म किया है। आराम से दूसरा लास्ट एपिसोड कंप्लीट हो सकता है। चले गाइस, वैसे भी तुम में से कोई देख नहीं रहा है, मेरे को मेरी इच्छा है कि मैं खेलूं, मेरी इच्छा है मैं 6th एपिसोड खेलूं और आज अपन गेम ऑफ थ्रोन्स का एंड कर रहे हैं। वैसे भी मंडे से नया हफ्ता चालू हो रहा है, बीजीएमआई स्ट्रीम्स की शुरुआत कर लेंगे फिर। मेरी इच्छा, मेरे को पर्सनली इच्छा मेरे को बस अभी करना है, क्योंकि अभी रॉड्रिक का ऐसा मरा है ना, तो मेरा अंदर का जो खून है ना उबला हुआ एशर का, वो मेरे को देखना है कि एशर कैसे बदला लेगा। क्योंकि थोड़ी सी और दिक्कतें हो गई, एक ना एक को तो मरना था गाइस, ये स्टोरी थी, एक ना एक तो मरना था, या तो वो रॉड्रिक होता या तो एशर होता। मेरी ऐसे बस अंदर से इच्छा है कि यार रॉड्रिक के साथ अभी इतना खेला है, एशर ने इतना छोटा सा रोल प्ले करके सिर्फ आर्मी लाके दे दी, एशर को फैमिली से दिक्का भी दिया था, और एशर एक नया बन सकता है ना, एक अच्छा कैपेबिलिटी था, यंग खून था, और रॉड्रिक थोड़ा बुढ़ा भी हो चुका था। वो सब बेसिस पर रख के मैंने एशर को लिया। मेरी इच्छा थी एशर बने, तो उसके अकॉर्डिंग गया गेम। अब एक 2 सेकेंड का ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा हल्का होके आता हूँ। अपन आज दी फाइनल छोड़ा कर रहे हैं, एपिसोड 6 आज अभी खेलेंगे और देखते हैं कैस किधर ये गेम ऑफ थ्रोन्स का एंड होगा। और ऐसा बोला है मैंने, जहां तक देखा है इसका सीजन 2 भी है, तो अभी तक सीजन 1 यहाँ पे खत्म आज हो जाएगा होपफुली। सीजन 2 में भी कुछ गेम है, रुको जरा सब्र करो, मैं 2 सेकंड में एकदम जल्दी से आएगा इस, थोड़ा सा हल्का होके। एपिसोड 6 अभी शुरू होगा, तुम लोग कहीं मत जाओ, 2 सेकंड में जाए, थोड़ा नेचर का कॉल प्रेशर होना समझो, 2 सेकंड में आया, बस 2 सेकंड में। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। मैं फुल तैयार हूँ गाइस, अपन ने स्नैक्स भी ले लिया यहाँ पे अपने साथ। लेट्स गो फाइनल एपिसोड गाइस, रेडी हो जाओ। चालू हो रहा है हमारा 6th एपिसोड, जो कि होगा हमारा फाइनल शोडाउन इस स्टोरी का। पता नहीं इसका सीजन 2 में क्या जाएगा ये, लेकिन सीजन 1 का ये फाइनल एपिसोड है। एंडिंग की तरफ हम आ चुके हैं। रॉड्रिक ने सैक्रिफाइस दे दिया है एशर के लिए। ऑब्वियसली यार रॉड्रिक बड़ा भाई है, तो उसको ही देना चाहिए। और कब तक टिकेगा, मतलब उसके बाद रायन है, रायन छोटा है, रायन भी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो एशर में कैपेबिलिटी है, एशर को हमने बचाने का डिसीजन लिया है। अब आगे देखते हैं एपिसोड 6 में क्या होगा। मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, सीधा जाएंगे एपिसोड 6 में और देखते हैं क्या होता है। आओ जल्दी जल्दी आओ, लेट्स गो।
भाई मेरे अंदर की बहुत चुल मच रही है guys. Let's go guys. We are completing this game right now today. मेरे को कुछ प्री प्लान नहीं था कि मेरा प्लान तो ये था कि एपिसोड 5 पे खत्म करेंगे और एपिसोड 6 पे बिगिन लिखा है. बिगिन फॉर सीजन 2. भाई बहुत मजा आएगा गाइस. मैं एक्साइटेड हूँ. अपना स्नैक्स खाते खाते लेट्स गो गाइस. मजा आ जाएगा. चलो देखते क्या होता है. Now I realize it might be far more entertaining to watch Lud tear you to pieces. Last house standing wins. You have a good head for business, Lady Mira. What you need more than anything is an ally. I have to get in there, Sarah. Look, I can't get you in. Marjorie's already furious with you. You owe me for this. You're weak. Just like Ethan was. Making Duncan his sentinel. Take this traitor away. Tell your uncle. Tell him the North Grove must never be lost. They're everywhere! We make for the North Grove! Let me save your life and our house. Iron from ice, brother. Iron from ice. Iron from ice. Iron from ice. खोल देंगे. गैरेट भी अभी तक बचा है. गैरेट की स्टोरी देखते किधर आई है. Garrett is also still alive, guys. Garrett is also still alive. Garrett भी बहुत मस्त बंदा है. Gods. Can you see anything? Is it the North Grove? I don't know yet. मजा आएगा guys. मजा आएगा. The Forester sigil. Those look like ironwood trees. Hear the werewoods whisper. Haven't seen any werewoods this far north. The North Grove, beneath the watchful eye of the Ice Dragon. The Ice Dragon. हाँ ये लग रहा है आइस ड्रैगन जैसा लग रहा है. That must be it. We're close. I think I found it. You found it? लगता है ढूंढ लिया. Sure. We can't afford to waste any more time. Not with the condition he's in. You just have to trust me. I've gotten you this far, haven't I? भाई इतना Which is आगे आ गए. nowhere anyone in their right mind would be. We're close. I know it. I believe you, Garrett. I hope you're right. भाई मेरे को Don't लग know रहा how है much क्लोज further है. we can go. पर यहाँ तक आए तो किधर जाएंगे. चलते ना. राइट तैयार हो जा. इनकी जिम्मेदारी तेरे पे. टेंशन मत ले. गैरेट का हाथ मेरे हाथ में. मजा आ रहा है. मजा आ रहा है. मजा आ रहा है. He burns. He burns like all 7 L's combined. कॉर्टर टेंशन मत ले. तेरे को जिंदा बचाऊंगा ऑफिस में. टेंशन मत ले. एक बार नॉर्थ ग्रोव पहुंचने दे. तेरा सब मलम पट्टी करता हूँ. I know I'm not well. And up here that can get you killed. But you've always been there for me. If anything happens, तेरी बहन का ध्यान में I रखूंगा. want you to leave me. You take Sylvie and don't look back. Promise me, Garrett. I need to know you'll do it. If it comes to it, I'll do it. जरूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा इस. तेरी बहन को छोड़ूंगा नहीं. टेंशन मत ले. मैं भी तेरी बहन से मैं शादी कर लूँ. I found nightshade. It's poisonous, but in small doses it can help with pain. It's rare this far north. We can use the nightshade to make Cotter more comfortable. Right.
करने देना, इस पे ही नाम आएगा। वैसे ही वो मरने वाले हैं, ऐसे मर रहे तो मर अच्छा। I know how to use it. कर कर मलम पट्टी कर, होता है तो ठीक है। कर कर हेल्प कर गैरेट उसकी। Touch and hold, then swipe up. तू मलम पट्टी कर, मैं देखता है। You see this? Claw marks. Gods. कौन है ये? अरे डियर की गेम मजा ही रे। It's been torn apart. It's not frozen. Must be a fresh kill. फ्रेश ही है अभी तो, क्या सामने सामने। और क्या करूं इधर? अरे ये तो झाड़ है, नॉर्थ ग्रोव का झाड़। हाँ नॉर्थ ग्रोव में। पोलर बियर, ये सेक्सी दिख रहा है बहुत। ए मेरे को सेक्सी मस्त लगता है रे, पोलर बियर मस्त लगता है रे। Shit! We have to cross the ice! Get Carter across! I'll hold it off! Go! ए आराम से, देखो मारना नहीं चाहता पर मारना पड़ेगा। सॉरी पोलर, अरे सॉरी पोलर बियर, चल बे नल्ले। धक 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 धक। आ गए, बच गए शायद, बच गए। गेला का पोलर बियर। क्वार्टर की हालत तो बहुत खराब है। 7 hours. क्वार्टर जाएगा कैसे 1-2 मिनट के अंदर अंदर। Come on. अपन नॉर्थ ग्रोव में, ये तो पक्का है क्योंकि उसकी अपन ने विस्पर भी सुना और वो झाड़ भी देखा। अंधेरा क्यों हो गया बे? आ गए ना नॉर्थ ग्रोव। You were right, Garrett. यही तो है नॉर्थ ग्रोव। गाइस मिल गया, नॉर्थ ग्रोव मिल गया, यही चे। Finally, we found it. After everything we've been through. यही चे गाइस, यही चे। नॉर्थ ग्रोव मिल गया फाइनली। I hardly believe it's real. Fuck. Whoever they are, they can help us. ये पोलर बियर अब तक मरा नहीं क्या? गाइस फाइनली नॉर्थ ग्रोव जिसकी तलाश थी गैरेट को, वो मिल चुका है। ये क्या? इधर तो लोग हैं। Garrett! ये तो वो है। We're almost there! Quickly, to the village! अरे ये तो वो है। स्नो है ये तो। Do something! नहीं। ये स्नो नहीं है। Wait! No! Garrett! Tell them! I represent House Forrester. I was squire to Lord Gregor himself.
उनको पता है ना अपन कौन है। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। आन दो। आज लेट हुआ तो भी चलेगा, आज लेट हुआ तो भी चलेगा। मजा आ रही है। लेट्स गो। यही तो स्वाद चाहिए भाई। तुम लोग नहीं जानोगे गाइस, यू आर नॉट द रियल गेमर्स। तुम लोग नहीं जानोगे इसका स्वाद, ये एक्साइटमेंट क्या है, तुमको नहीं समझ आएगा। The ones who are the real gamers, उनको ये समझ में आएगा, बाकी किसको भी नहीं समझ में आएगा भाई। ये एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई है ना गाइस, बता नहीं सकता भाई। स्वाद गेम अभी तक खत्म भी नहीं है। स्वाद आ गया मेरे को तो, एक नंबर, अनबिलीवेबल भाई। ऐसी गेम फोन में भी होगी, मोबाइल में भी होगी, सोचा नहीं था भाई। चुम्मा Game of Thrones for the last time, guys. For the last time of season 1, episode 6, The Ice Dragon. बहुत, मेरे को नहीं लगता इधर एंड होगा। सीजन 2 में अपने को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इसका एंड होगा यहाँ पे। Please, Lady Marjorie. Please don't send me back to Highgarden. Finally, you grace us with your presence. I was beginning to think you'd found someone else to serve. Sorry if I kept you waiting. I came as quickly as I could, my lady. I'll get to you in a moment. Do you realize how precarious my position is with Cersei? Of course, my lady. Of all the people in King's Landing, you steal from the Queen Regent. I didn't mean... Did you know about this? Yeah. Sarah's been stealing wine. From Cersei, no less. Stealing wine, I'm my shocked. lady. I'm shocked. Sarah, how could you? Oh, please, don't take the scepter. You have plenty to answer for yourself. I'm sorry. I shouldn't get so flustered. It's just... I need order in my household. Until I'm married to Tommen, I can't afford any more mistakes. I have no choice but to make changes among my handmaidens. Tommen's garden party, Mira. What were you thinking? I can't believe you'd be so irresponsible. I expected better of you. But, Lady Marjorie, I don't know what you mean. Oh, I must have it wrong. It must have been some other handmaiden making a scene with Lord Andros. Oh. Sarah's been saying some damning things about you, Mira. I suspect in an effort to save her own neck. Please, you've said enough. One of you must answer for this. Sarah says you used her to get you into the party. You've been with me a long time, Mira. When I'm queen, I'll need people I can count on. Please, tell me this isn't true. Please, Mira. I don't deserve to lose my position for this. I'm begging you. Just tell her the truth. My lady, इस बेचारी बच्ची है, अपने पास तो अपन फॉरेस्टर बहुत पैसा है। Sarah's telling the truth. पूछ रहे चल चारा, तू क्या याद रखेगी? दोस्ती का अगला नाम दिया मैंने, चल। This has been building for some time, Mira, but it still breaks my heart. ठीक है, चल। I've been nothing but good to you. I've put up with your schemes,
I've even tried to help you and your family where I could. अरे घंटा. And you repay me with this. घंटा तूने कुछ हेल्प नहीं की, ठीक है? I feel सब मैंने खुद ने किया गाइस. betrayed. अरे जब betrayed, एक लपड़ I गई. won't have it. You'd have done the same in my position. Don't tell me what I would or would not do. एक लपड़ गाएगी ना, एक लपड़ का ऑप्शन दो ना गाइस. इसकी माँ क्या ऐसा मारेगा ना इसको. But my lady, get खोपड़ी out. फोड़ देगा साले का. ऐसे साली का. फॉरेस्टर हूँ, औकात ना दिखा, 2 सेकंड में लाइन पे आएगी. अरे गाइस पर मैं तो भूल रहा हूँ सीजन 2 भी हो सकता है. सीजन 2 में मेरे को ये रीपे करना पड़ेगा ऐसा. अगर सीजन 2 में भी यही चीजें कंटिन्यू होगी तो. पर छोड़ो, तो सही था, सही सच का साथ देंगे गाइस. काय को झूठ बोलने का. उसको अपन ने फोर्स किया, उससे अपन ने हेल्प मांगी, उसने की. इसका ट्रस्ट तो गेन किया अपन ने एटलीस्ट. फिर से एक और बार दूसरा देखें. I swore I would never talk to you again. But I have to ask, why did you stop Lady Marjorie from sending me home? I expected I'd be on my way to High Garden by now. But you stood up for me. You're my friend, Sarah. I look after the people I care about. इसको पकड़ के रखते हैं. Has always been the अगली बार फिर से काम आएगी. Now, I know you didn't have to. I wish things had turned out differently. But I suppose this is goodbye. I'm not sure when. I'm not sure we'll see each other again. You need to learn to be a better liar if you want to survive. King's Landing is no place for the good-hearted, Sarah. That may be you, but it's not me. Then you should think about getting out. As soon as you can. Since you helped me with Marjorie, I owe it to you to tell you this. There are some vile rumors going on about you. Rumors? About you murdering a Lannister guard. I thought you should know. हमने तो ना किया, वो तो ने टॉम ने किया था, पागल ने. Careful, Mira. You're on your own now. ठीक है चल. वो तो ने टॉम ने मारा था उसको. नहीं, मेरे को एशर की स्टोरी देखा हो. एशर क्या कर रहा है? देखो एशर का पार्ट है ना ये. Let's go, boys. Let's go. Let's go. They're right behind us. Less than half a league. You were right, my lord. I know that snot-nosed bastard Griff. He was sent to kill me, not Roderick. He wouldn't run home to his father without trying again. Listen close. I want the road surrounded. ये दिमाग वाला है, इसलिए मैंने लिया. इसको पता है क्या करना है, इसलिए इसको लिया मैंने. This goes to hell. They'll need to know about Roderick. मतलब मेरे डिसीजन को अच्छा बनाना मतलब ठीक है. गेम पे ध्यान देंगे. लास्ट एपिसोड है ऑफ द सीजन. And what order is that, Ash? Just follow my lead. सबकी गेम में जाऊंगा. रुको, आओ आओ बंधु लोगो, आओ मेरे बंधु. चल तेरी तो चल नल्ले. मेरे भाई को मारा तूने. मेरे भाई को मारा. मारो मारो सालों को. पेलो की माँ का. पेलो पेलो सबको. चल इसके खोपड़ी फोड़ सालेगा. खोपड़ी फोड़ सालेगा. पेलो 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 गाइस पेलो. ग्रिफ किधर है इनका? चल तेरी तो नल्ले. मेरे को मारेगा. मेरे भाई को मारा तूने. खोपड़ी डालो उसका. यस, अभी तक जीत हुई नहीं है भाई. ग्रिफ किधर है? Where is Griff? Oh, he's a bloody coward. डरपोक साला. Was the coward. You should have seen him squeal when Griff gutted him like a pig. ग्रिफ कहाँ पे बता? ग्रिफ कहाँ पे बता? You think this means a thing? The Foresters are finished. अच्छा. You're already dead. अच्छा. My lord.
मैं सुनना चाहता था गाइस क्या बोल रहा है वो, मैं सुनना चाहता था वो क्या बोल रहा है। अब और तड़प आएगी ना इसको मारने के लिए, वाइट टेल्स को मारेंगे, जरूर मारेंगे, कह के मारेंगे भिक्षा, तड़पा तड़पा के मारेंगे। कमजोर मत हो ऐशर, तेरे को सुनाना चाहता था मैं। I'll never get to drink with him, fight by his side, complain about what an arse his little brother is. अपने को अंडरएस्टिमेट थोड़ा ना करूँगा। After the twins, I mean, he rose from the fucking dead. अपने आप को अंडरएस्टिमेट थोड़ा करूँगा। Kept this house together through sheer force of will. करेंगे ऐसे टू अंडरएस्टिमेट तो अपने। They'll sing songs about him someday. अंडरएस्टिमेट मत कर रहे, तूने इतनी आर्मी खड़ी की है, हाँ। By the laws of your land. And to these men, you've more than proven yourself. I know. Lord, if I don't become Lord, Roderick's sacrifice, everything we went through, will be for nothing. Lord बनना पड़ेगा। You'll make Roderick proud. Let's go. Make your father proud. Let's go, Viksha. Only he That's can see my me girl. out. That's my girl, Viksha. Let's go. To go, my lord. And Lord Whitehill will be on the march. वाइटल के आने की स्वागत की तैयारी करो, स्वागत की तैयारी करो उसकी, कह के लेंगे उसको तो। चलो गाइस, वाइटल की तो देखो तो सही तुम क्या करता हो, मेरे को बस एक मार की लूंगा सबकी। तुम देख, मेरे को ये सीजन में मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे को मारा मारी का ऑप्शन नहीं मिलेगा इतना, या फिर मिल रहा है अभी। लेट्स गो गाइस, अपन घर वापस आए रे, without Roderick, but Asha. Roderick. सबको पता था रे कहीं ना कहीं एक बंदा सैक्रिफाइस होगा। How could this happen? It makes no sense. We were ambushed by the Whitehills. There was simply too many. If there was anything more I could have done, I swear, but... औगाट पकड़ लिया था। तैयारी के साथ ऐसे 1v1 मतलब। I saw him. I stormed out of the room. Talia, Mother, listen to me. We don't dare take time to mourn. Not yet. Lord is sure to move quickly now. He could be at our gates before nightfall. But there's hope yet! I've brought help! Warriors from across the narrow sea, with no equal in Westeros. ये काफी नहीं होंगे मेरे हिसाब से। Whatever their skill, they are hardly an army. Milady, I've seen them twice in battle. I've seen Asha lead them. They're a force to be reckoned with and will be more than equal to whatever Lud could muster. How can you say that? We've already lost. What are you talking about? Ramsay Snow. He came here. He set terms of war. He said the last house standing wins. Ramsay कौन होता The है? Lord of House Forrester dead. I fear she's right. By the terms put forth by the Boltons, we don't have a claim. Oh, fuck Ramsay. Fuck Ramsay. Fuck the Boltons! Fuck the This war Boltons. is not over until I say it is! Asher will lead us! Asher is our Lord! Let's go रे, Ramsay को तो आन तो दो Ramsay को। Asher, I wish this were a happier occasion. But this sword has been held by a Forrester Lord for centuries. Now, it is yours. Let's go boys. पहले तो मैं तो बोलता Ramsay की गेम टाकते। वो कौन होता है रूल्स लगाने वाला? Asher Forrester, Lord of Ironrath, defender of the Ironwood Groves. My father never trained me to be a lord. This was supposed to be Roderick's sword, but I was trained to fight. And by the gods, I will defend my father's house to the last breath. House Forrester will prevail this day!
Literally is goosebumps है, literally goosebumps आए इसी टाइम पे. Let's go खाड़ देंगे पूरा, खाड़ देंगे. चल ऐशर चल, आंदे जिसको सामने आना है, फाड़ देंगे ऐशर, फाड़ देंगे. कैरेट का क्या विषय? भाई फॉरेस्टर बोला ना. He's lying. नहीं. Look at him. He's a crow. He doesn't represent the foresters. अरे फॉरेस्टर हो, क्या बताओ इसको? Seen a crow this far north of the wall. Must be a deserter. I don't trust fucking deserters. And you're traveling with a wildling. All the more reason not to trust you. We're not your enemy, says the man who wounded my bear, who came here uninvited. I could have killed you out there, as easily then as I could now. He's a warg. The bear likes your kind even less than I do, so I suggest you shut your mouth. Your blade pierced his shoulder, and I felt the pain as if it were mine. You couldn't possibly understand what that's like. So क्या करूँ मैं? But I could make you understand. अरे फॉरेस्टर हूँ यार मैं. Enough, Josra. He claims to serve House Forrester. हाँ. Anyone could say as much. What proof do you have? क्या दिखाऊँ उसको? If you'd have us believe it's not a lie. I was given this by Talia Forrester before I left. It's the Forrester sigil, made from ironwood. देख लो नेकलेस है. Harida East. मान गए. Trust this crow. अरे मैप भी दिखाता हूँ. That necklace is Forrester ironwood. No one else could craft it as well. My friend is wounded. खत्म गेम इसकी तो. He won't live long without our help. High Vis. बच जाएगा. Wait! Where are you taking him? Who is this चुप ना. girl? Is she a prisoner? Why else would you be traveling with a wildling? She's my friend. A wildling girl. I told you we couldn't trust him. She'll betray you the first chance she gets. नहीं betray नहीं My करेंगे. name is Elsera Snow. This is my brother Josra. बोला ना ये स्नो से कुछ तो. What is this place? A refuge against the forces of darkness during the long night. देखो ना वो पोलर बियर क्यूट है, मेरे को पसंद है यार. उसको अपन ने मारा अच्छा नहीं लगा रे. Know how to use पोलर बियर पसंद है अपने को. I assume that's why you're here. You're a long way from home, aren't you? There must be a reason you've come all this way. House Forrester is in great danger. The Boltons are the Wardens of the North now. Ever since Lord Gregor fell at the Twins, the White What do you mean? Since Lord Gregor fell? Lord Gregor was slain at the Twins months ago, betrayed by Walder Frey. You didn't know? Of course. How could you? He has no idea who we are. Why would he? You're right. He's just a messenger. All he did was use some ironwood necklace they gave him. Huh? Why should we trust him with anything? They clearly didn't. Otherwise, he would know. I'm here representing House Forrester. I deserve to know. They would have told you already if they thought you were worthy. Perhaps Lord Gregor never told anyone. I wouldn't be surprised. Better to hide his shame where no one could find out. अरे यार पर ये क्या बात कर रही है अरे? Whites. Gregor wen Fenden Björnen. This is the gift the Grove gives me. I control these warriors. What about them? Hiftanes. What? No! Let me go!
Did they teach you to fight at Castle Black? I hope they did. Otherwise, you're likely to die. I'll do whatever you need me to do. Good. करते ना मारा मारी गाइस ये पोलर बियर मस्त है वो पोलर भागा सबसे पहले वो भागा वो खतरनाक है भाई टेंशन मत ले मैं आता ना वापस evil, Garrett. I can feel it. ए तू चुप रहे evil नहीं है these people. Those warriors, they're not normal free folk, not like any I've ever seen. Ready. चल 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 अरे इसको मेरी फैमिली का मैटर है तू रुक 2 मिनट मारा मारी करके आते थोड़ा तेरे भाई को बचा नहीं है टेंशन मत ले बाकी आगे देखते लड़ा करते ना इस मारा मारी लेते ना अरे यार मैं रख देता फोन साइड में इसको करने दो जो इसको ये टॉम ने मारा था ये इस नंदन ने मारा था Wait. Tom, what is it? Guards, they're searching your room. अच्छा अच्छा करना पड़ेगा मेरे को इसका रोल प्ले चलो भाई break it down. Search the place. They're coming after us for the murder. Shit. The knife is in there. We should have gotten rid of that ages ago. Come on, we can't stay here. अरे अपन नाइफ रख ली थी ना अपने को फेंक देनी चाहिए थी Said she'd heard rumors about me. It's all over the keep, milady. They're saying you take Lannister men to your bed and murder them in their sleep. What? That's ridiculous. ये तो कुछ भी बोल दिया भाई If soldiers weren't smashing in your door, they're saying you killed that Lannister guard. There's more. Someone sent the captain of the guard a message about you. Dropped off at the guardhouse. You mean someone's plotting against me? What was in the message? Murder accusations, most likely. Whoever's behind this, they're making their move now. If those guards catch you, if they catch us, we've got to stay close to Lady Marjorie. They won't touch us if we're with her. She'll protect us. We don't need Lady Marjorie. I can handle this myself. Have you gone mad? Without her, you're left with no protection. They could gut you in an alley and no one would say nothing. Calm down. Panicking isn't going to help. Those guards won't stop until they find someone for Damien's death. What are we going to do, Lady Mira? How are we getting out of this one? I have to get out of the keep. Or I'm done for. You, my lady? We're in this together, like it or not. But I don't know how to aid you now. Tell me and I'll help you. Whatever it is, we can't stay here. Things are too dangerous for me. I need to get back to Ironrath. There's a collier's store by the river gate, on Muddy Way. The owners are like family. You'll be safe. From there, we can get you out of King's Landing. Show yourself, or it'll be worse for you. चल नट जा देख क्या रहे चल 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 नट Tell Godwin I sent you. Goodbye, Lady Mira. The coal boy. Take him. ये भी नट रहा है रे क्या यहाँ पर बच्चा है रे क्या करेगा क्या यहाँ पे अपन कुछ और कर सकते थे ये कौन है भाई Let's go, Asher. We are ready, boy. Mira told us he was gathering an army. We have her to thank it's not bigger. Mira के पास घंटा कुछ नहीं है.
He doesn't expect us to. He's trying to frighten us into surrender. I want every bolt aimed at Lord Whitehill the moment he appears. आ गया व्हाइटहिल गिरफ्त के साथ। रायन भी बैठा हुआ है रे। ये रायन देख, तू टपका भाई। Crossbows up! Asher Forrester! ये रायन टपका है, जान दो उसको यार। उसके लिए इतनी पूरी गेम बिगाड़ी मैंने यार। और रायन की वजह से रॉड्रिक मरा, नहीं तो उधर ही गेम ठार करता था इसकी। He's frightened, father. Anya! Well, Lord, you must not have much faith in this army of yours if you feel the need to hide behind my little brother. No, coward. You mistake me, Forrester. Ryan is here for your protection, to stop you from being stupid. You see, I'm here to end this once and for all. Acha. You got your little revenge on my men, but it's time you listen to reason. ये तो डायरेक्ट दरवाजा खोल रहा है अभी। Your gates down and kill every last one of you. अच्छा। Or we could end the bloodshed here and now. This war is over, Asher. It ended the moment Roderick fell. By Ramsay's rules, I'm the victor here. This will all be mine now. One way or another. Oh, this is horse shit. Tell him to fuck off. You put too much stock in Ramsay's terms, Lord. Terms set by a madman. Terms I never agreed to. You really think Lord Ramsay will ask if you're in favor of his terms? Before flaying you alive for breaking them? Let's put all this ugliness behind us. I'm willing to talk terms of your surrender. Surrender? Surrender, Open your halls and bend the knee as my bannermen. You continue to produce ironwood under my supervision, of course. No. And you will join your house to mine. No. For all to see. By wedding my queen. No. Well, fuck me. Asher, you can't. It's rather generous terms, actually. Are you simple? Not once if you understand. I don't know. I would just as happily kill you all and be done with it. But I'm very generously giving you a way to keep your bloody lives. Oh, one last thing. As a show of my goodwill, I've brought home the body of your lord. Your brother was too stubborn to know when it was over. Roderick, let me see him. I want to see my brother. I'm sure your people will be relieved to keep their lives. We'll take Ryan too. But you want peace between our houses? Give me my living brother. You have an hour. I'll be waiting in my camp. नहीं दिया है उसने, 1 घंटा दिया है अपने को। क्या करे? क्या करे? देखते क्या है? कुछ और है इसके अंदर। रॉड्रिक नहीं है, रॉड्रिक ही है। रॉड्रिक जिंदा है? No! I'm sorry, little brother.
I've buried too many sons. Maester, take my brother's body. You will join Father and Ethan in the grove. As you say, my lord. But... forgive me, I just... Perhaps the time has come to truly let this bloodshed end. We simply accept. We bow our heads and Acha marries Gwyn. Craven! It's not the worst terms I've ever heard. I can't bow my head to the fucking Whitehills after all they've done. नहीं नहीं इतना कुछ ना तो मैं भी मर जाता ना फायदा ही नहीं है रॉड्रिक के मरने का क्या फायदा हुआ फिर Even if you went through with it, Lud would have you killed the moment Gwyn produced an heir. There will be no marriage. If we bow our heads now, we'll always be his slaves. We have to kill them, Acha. Piss on surrender. Let's ride out and kill them all. Aye. We ride for war! We ride! Spill their blood! Believe me, I want to kill every last fucking one of them. But I'm not sending you all out to certain death. Just don't have the numbers. But maybe we don't have to. Lord rules that house with an iron fist. His sons, his bannermen, do nothing without his say-so. There may be 500 men outside that wall. Without Lord of the League... They'll scatter like chickens with their heads cut off. That's good, but how? Lud will not simply cast aside his men and offer his neck. Such a task is easily said, but Lud is wary. We tell Lord exactly what he wants to hear. We invite him inside to celebrate and drink to our union. And then? An ambush. Your pit fighters hidden until the last moment. No, an ambush is too chaotic. Things could go badly quickly. Lud could escape. There's another way. Poison. In his wine. नहीं poison नहीं तड़प तो नहीं A woman's weapon. Yes, and a good one. Lethal and direct. Either plan is high risk. We only lure Lud inside and the whole family is जैसे उसने मारा है ना उसको poison की कीमत नहीं दूंगा will both be in danger. I understand the risks. उसको poison की कीमत नहीं दूंगा गाइस उसको Ambush is the best way to kill as many Whitehills as possible. easy मौत नहीं दूंगा उसको इतनी easy मौत नहीं दूंगा एम्बुश करके मारूंगा तड़पा के गला काटूंगा सबको इतनी इजी मौत नहीं दूंगा नहीं उसने जैसे रॉड्रिक को मारा है ना इथन को मारा है ना इथन को तो रैमजी ने मारा है रैमजी को मैं मारूंगा तड़पा के 1v1 लूंगा रैमजी के साथ तो पर इनको तो इन्होंने जो रॉड्रिक को मारा है ना वैसे इनको मारूंगा इससे भी बदतर मारूंगा अगर मेरे को मौका मिलता है तो I won't forget this. Poison I've forgotten the number of times I've heard you say that. I've said that before. चल भिक्षा तेरे को भी और बहुत काम करना है मारामारी करनी है Roderick's death tonight, whatever it takes. Yes. Send word to Lud. We'll drink this night to the prosperous future of our united house. उसको दिखा देना कि वो जीत गया है लेकिन उसको एंड टाइम पे एक एम्बुश से मारे दिखना तो जीत गया है रुको ना भाई गेम बड़ा करेंगे बहुत Search the area. मीरा आर्मी लाने वाली थी लेकिन ये तो भाई साहब अकेली आ रही है इसका क्या करूं मैं अभी तू मर जा एक काम कर Lady Mira. There she is. Take her. What's all this? I'll tell you on our way. You're making a big mistake. Don't you know who this is? Doesn't matter who he is. We're here for you. This is Lord Rickard Morgren, the most powerful ironwood merchant in King's Landing. One word to your superiors, and he'll have you carted off to the wall. Smart खेल रही है लड़की Rickard, tell them how far you'd go to protect your friends. Lady Mira, I hope these men aren't bothering you. We have orders from Captain Lucan to... Let me worry about Lucan. You worry about buying yourselves a few tankards. On me. Thank you for keeping our city safe. पड़ गए सस्ते में पड़ गए रे इतना एक Can I सिक्का take you somewhere, Lady Mira? देखते ना इसको लेके चलते शहीद होने के लिए तैयार सर आपकी बलि चढ़ सकती है
आप बहुत ही गलत इंसान के साथ बैठे हो सर, फॉरेस्टर है। The river gate. कुछ भी हो सकता है। Thank you. The river gate, quick as you can. What's going on, Mira? Is there a problem? Maybe I can help. Minor trouble, Lord Morgren. Nothing I can't deal with. Of course, I never doubted that. Although those guards did seem quite intent on dragging you off. Clearly you've made powerful enemies here in King's Landing. Although, you've made short work of one of them at least. I hear Lord Andros has found a home in the Black Cells. I'm impressed. It seems he took on the wrong handmaiden and lost. Andros was just the beginning. I plan to destroy anyone in my way. Of course, now that you've gotten rid of my biggest competitor, all kinds of opportunities have opened up. Particularly in your part of the Seven Kingdoms. The Ironwood market is wide open. A lot of gold to be made. There's opportunity enough for both of us, Lord Morgren. Think of what we could accomplish if we worked together. I have thought about it. I've thought about it a great deal. You're clever, Mira. Getting that decree from Tyrion's chambers, I still wonder how you managed such a feat. Of course, I knew you'd be a problem when we first met. Imagine a handmaiden stealing the crown's Ironwood contract from under my nose. That's why I bribed that Lannister guard to kill you. Don't look so surprised. You must have known you'd become a target sooner or later. Do you really think you'll get away with this? I already have. After Ludd takes Ironrath, he and I will control the Ironwood trade entirely. You've been very helpful, Mira. But it's time to get you out of the way. Can't have you complicating things. You're making a mistake, Morgren. Ludd will turn on you the first chance he gets. You're a fool if you don't see that. इसको इसके खिलाफ भड़काने का ट्राई करते हैं। Tell me, Mira, who is the fool here? You or I? तू। अरे नल्ले लड़की पे हाथ उठाता है लुखे। We've arrived. Now get out of my fucking litter! Lucan, fancy coming across you here. I seem to have found something you're looking for. That you have, my lord. I've been searching for this murderer a long time. Finally, I got her. You don't need to do this, Lucan. Whatever you think you know, we can work something out. Shut your liar's mouth. It's time you answered for your crimes. Take her to the cells. Chin up, Mira. I'm sure if you ask him nicely, the headsman will be quick. गेम अभी तक खत्म नहीं है मॉर्गन। गेम अभी तक खत्म नहीं है। मेरे पास भी एक का है अभी भी, मार्जरी नाम की। महंगा पड़ेगा तेरे को बहुत। मार्जरी अभी भी अपने साइड पे आ सकती है। Forgive my brother's temper. It's said over time wargs adopt the traits of their animal. And your news was unexpected. You see, Gregor Forrester was our father, and we are his bastards. I doubt anyone knows. It was his dark secret, and he feared his family would find out. This can't be true. Lord Gregor was an honorable man. But a man all the same. Josra would say he banished us to hide his shame. But I like to think it's because he knew what we were. That he was protecting us in his own way. We thought one day Gregor would come and see everything we've built. But instead it was you. You are the first to arrive. It must have been a difficult journey. Few try, and fewer still live to tell about it. I fought the phrase.
I fought the dead. It wasn't easy, but I've endured worse. I can tell. Not many can survive this far north of the wall. But here you are. Our father entrusted us with protecting the North Grove. That has always been our purpose. But we've learned there's a power here, Garrett. A power we've only just begun to understand. Winter is coming, and we haven't much time. क्या कर रही है? Gregor ven fionden Bjorne sager ven. क्या हो रहा है? Snällod mopre befastan. ये क्या किया इसने? अरे क्या कर रहा है भाई ये? डरा रहा है। ये बोलर वेयर मस्त है रे। क्या करते हुए थोड़ा अजीब लगता है। क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? हाँ नल्ला। गहरे तो पोलर बेयर बचाया रे अपने को। चल तेरी पोलर बेयर मारी मैं बोला ना पोलर बेयर मस्त है। चल तेरी तो पोलर बेयर को मारेगा मेरे। Oh, you're an ugly bastard. The bastard. निकल बे नल्ले पूरे माँ के। चल बे गया क्या खत्म क्या गेम? हाँ इतना ही था खत्म। चल बे नल्ले। सर अपने को डंडी निकालनी नहीं थी। इसने ये बैठ के क्या किया? ये साला आराम से बैठा था। Well, for a crow. I saved your life. I wouldn't go that far. Although I admit you can fight. Maybe they did teach you something at Castle Black. Is that your way of thanking me? Maybe I was wrong about you. We'll see. अरे साला पलथी मार के बैठ के कर क्या रहा था? Killing them I don't mind. It's the burning that stays with you. You'll never forget that stench. Did you see what they just did? They don't care about their own. My sister has trained them well. Emotion is a weakness, according to her. They don't mourn their dead.
They've been trained to fight. Nothing else matters but that. They're more my sister's doing, not mine. The whites grow bolder by the day. Ever since the wildling tribes went south with Mance Raider. Are you all right? You don't look well. It's nothing. I'm fine. I should return to the village. Fulgorn Weiseneer. उसके एक ही कमांड पे देखो ना सब कैसे रुक जा रहे हैं. कमांड बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो. Did you not hear me? Fulgorn, Suna. अरे भाई ये कौन है भाई? What? Wait. Fulgorn Weiseneer. ये कौन है भाई? You're losing control. What was that? It's blood magic. The more she uses it, the weaker she becomes. And they can sense it. Elsera's a fool to keep taking these risks. There must be something you can do to stop her. She is convinced her blood magic is the only way to protect the North Grove. That her warriors are the answer. She can't control it. I worry about her. ए भाई नॉर्थ ग्रोव का सवाल है तो मैं रिस्क नहीं लेगा उसको करने दे उसको जो करना है वो पोलर बियर देता है क्या मेरे को पसंद आया रे वो ए वो पोलर बियर देना वो मस्त है रे यार देखो कितना मस्त देख रहा है रे क्यूट है रे ए मेरे को पोलर बियर देना है क्या नाम है इसका स्नो जो भी तेरा नाम है पोलर बियर देना भाई मस्त है तेरा देखो ना मस्त कैसे पीछे जा रहा है एकदम आराम से That's why he sent you, isn't it? To bring us back to Einrath. नहीं. To crush our enemies south of the wall. And avenge his death. ये place We can't leave the North Grove. And stay here to die. I'd भाई इसने बोल. You said yourself, House Forrester is in danger. This is our chance to do something about it. भाई ये जगह नहीं छोड़ सकते. Sorry, उसने बोला था ये जगह कोई भी हाल में जानी नहीं चाहिए. मेरे को पता नहीं गैरेट के साथ अपने को क्या करना है. Never trust a fucking wildling. भाई मेरे को पता नहीं गैरेट के साथ क्या करेंगे ये लोग. गैरेट को क्या करना है मेरे को ये पता नहीं है. मीरा तो फंस गई. गैरेट का क्या करेंगे? वो जो पहला लॉर्ड जो मरा था फॉरेस्टर मेन उसने बोला था कि ये आयरन रात को जाने मत देना कभी. आयरन रात नहीं सॉरी नॉर्थ ग्रोव को कभी जाने मत देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इनको वहां लेके चले गया तो इधर दिक्कत हो जाएगी. तो मैं वहां लेके जा नहीं सकता तो मेरे को यहीं पे रुकना पड़ेगा. मतलब गैरेट को नॉर्थ ग्रोव में ही रुकना पड़ेगा. अगर मीरा का क्या करे? इसका क्या करे? लाइब्रेरी Jailer, please. Shut it. Please come here. मार्जरी है क्या? नहीं तो प्रिजन. Hello. Excuse me. मैं बोला मार्जरी कैसे? Can you get me out of here? Because if not, I don't want to know. Hey, no talking. Jailer, come over here. Oh, don't you start again. Why don't you come here for a moment? We can have a little chat about it. God's woman, I said shut it. Or I will come in there, and you won't like what happens. Well, what do you want then? Well, tell me, please. I'll do anything. Just tell me. Bastard! Before the day's over, they'll take us straight to the block. So don't give me that look. You can leave the judgment to the Father, whatever gods you believe in. I'm sorry,
I meant no offense. But we have to keep our heads held high, even when everything else is taken from us. अब लुक कौन ले रहा है? अब कौन लुक दे रहा है? A little baby boy. I think of the smell of his skin, his tufts of brown hair. There is nothing I wouldn't do. Nothing. Just to hold him again. Dignity is worthless compared to that. मैं समझ सकता हूँ. टेंशन मत ले. अगर मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ तो तेरे को भी लेके जाऊँगा. I'll never see him again. People will tell your son about you. Stories about what you were in life. Give him a story he can be proud of. But you've no idea what I've done. Doesn't matter what we've done. All that matters now is what we do next. Mira, making friends already, I see. Be quick. We'll be coming back for her next. For your trouble. ये क्या करना है यहाँ पे? What? Nothing to say? Block will do that to you. They'll be here for you soon. You don't have much time. What are you doing here, Morgren? Come to rub your triumph in my face? Far from it, Lady Mira. I've come to make you an offer. क्या offer है? I was thinking about what you said, and I've come to the conclusion you're right. Lud will likely betray me the first chance he gets. And I realized I'd overlooked something of great value. Your name. I want you as my wife. Your wife? Have you lost your mind? Not at all. This makes a lot of sense for both of us. I want Ironrath, and you're going to give it to me. It may not be the grandest castle in Westeros, but it's a start. Marrying me won't help you get Ironrath. The title belongs to my brother. He's the rightful lord. I'm well aware of the king's law, Mira. You think I haven't thought about that? Two of your brothers are already dead. That idiot Lud will take care of the rest. One way or another. And it won't take me long to get rid of the harebrained fool myself. I'm sorry, Mira. None of your family will survive. Ironrath will fall to you. And through marriage, it will become mine. A holdfast in the north can only help my ambitions. Until I cut your throat in your sleep. Doubtless you'd try, given a chance. But you won't be. It's fitting our betrothal begins in a cell. I'd say it's a perfect symbol for the rest of your life. You plan to keep me locked up? Well, perhaps not literally. If you play your part and produce my heirs. नहीं. शादी की दिक्कत The होगी. murder of a Lannister guard can't go unpunished. But I can get you out of here, Mira. One word from me, that coal boy takes your place on the block. Tom! All you have to do is agree to marry me. marry नहीं. You'll give up your ancestral home. Guys, अगर अपन इससे मैरी कर लेते हैं तो दिक्कत क्या होगी कि ये इसको चाहिए आयरन रात है फॉरेस्टर्स का, वो रहेगा फॉरेस्टर का ही.
ये खुद एक फॉरेस्टर है, अगर ये इससे शादी कर लेता है तो ये एट द एंड फॉरेस्टर की फैमिली में आएगा। इसका प्लान क्लियर है, इसको पूरा आयरन राज चाहिए, इसको पूरा आयरन राज चाहिए, तो ये सबको मारेगा, तो हम हमारी फैमिली को मरते हुए देख नहीं पाएंगे। इसके वजह शादी मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी, हमारा इसमें घंटा कुछ फायदा नहीं होगा। शादी नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। But you'll be alive. इसमें गेम ऐसी भी नहीं है ना कि इसकी मेरे हाथ में कंट्रोल है कि मैं अभी इसको हाँ बोल लूं बाद में बिट्रे कर लूं। मेरे हाथ में गेम ही नहीं है, तो मेरे को पता ही नहीं आगे मेरे को बिट्रेल का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर बिट्रेल का ऑप्शन नहीं मिला तो मेरे को इससे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो अभी ऐसा भी नहीं कि मैं अभी हाँ बोल सकता हूँ बाद में जाके बिट्रे कर सकता हूँ, ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख चुकी है, जो होना होगा ये वही होगा, मैं कोई भी कुछ भी कर लूं। मेरे हाथ में पावर है ही नहीं। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं अभी हाँ बोलता, बाद में बिट्रे कर लेता, क्योंकि मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है। आज फिलहाल देखते हैं भाई क्या होता है। मैं शादी तो नहीं कर सकता, शादी नहीं, शादी इसमें नहीं, शादी के लिए नहीं हो सकता। What do you say? शादी के लिए नहीं, शादी नहीं। You will never have शादी नहीं, and you will never have me. What? You fool. I'd rather die. शादी नहीं। उसको मार सकता हूँ क्या यहाँ पे? Fine. Have it your way. शादी नहीं। अभी भी ऑप्शन है कि हम लोग मार्जेरी के साथ कुछ कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मार्जेरी का ऑप्शन मिलेगा मेरे को, पर शादी तो नहीं, डेफिनेटली नहीं। उसको आयरन रात थोड़ा लेके जान दूंगा भाई। इतनी मेहनत की आयरन रात बचाने के लिए, इतने सारे लोग मरे उसके लिए, और इसके साथ शादी करके मैं आयरन रात ले लूं और इसको दे दूं, और उसके बाद इसका प्लान भी है कि मेरे को बंद करके रखेगा। नहीं सर, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो रहा। Sylvie! He's my brother! I wasn't finished! क्या हो गया? When you're finished here, come see me. There's something I must show you. I don't trust these people, Garrett. Which was why I had to see Cotter. He's not well. And he won't live much longer. I thought he was getting help. Whatever they've done, it hasn't worked. There's nothing that will save him now. Which is why I need you to do something for me. I didn't want him to suffer anymore, Garrett. Just to ease his pain, but... that's when they found me. The Nightshade. I need you to be the one to end his suffering. But... it's our way, Garrett. You have to feed it to him. I'm trusting you to do this, Garrett. You're the only one who उसको can. मार रहे, उसको मार रहे। I will. उसको मारना पड़ेगा, या तो कुछ तो भी है। Trust me, I'll do the right thing. Thank you, Garrett. He's in so much pain. या तो ये उसके भाई को मारने के लिए बोल रही है कि वो बहुत ज्यादा पेन में है, या तो ये बोल रही है कि ये इसको दे दे, उससे शायद ये ठीक हो जाए। अब क्या है ये मेरे को नहीं पता, मैं उसको ये दे दूंगा। मरा तो मरा, बचा तो बचा। अगर नहीं दे पाया तो नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे को एलडीएन में कर रहा हूँ सब फॉरेस्टर्स के लिए। तो मेरी लॉयल्टी है फॉरेस्टर्स के लिए, तो देखते क्या होता है। चल भाई चल, देखते क्या होता है, इस क्या स्टोरी निकल के आती है। चल चल चल। I did everything within my power to help your friend. But I'm afraid it's too late. Nothing can save him now. Sylvie told me. Nightshade? What are you going to do with that? You realize it's deadly. And has no place in here. I promised Sylvie I'd give it to him. To end his suffering. I don't know what that wildling told you. But that will kill him and taint his blood. What? Garrett,
Is that you? It's me, Cotter. I'm here. Where's Sylvie? Hey, safe है, टेंशन मत ले. Where is she? Did something happen to her? Don't worry. कुछ नहीं हुआ, Friends इसको are taking टेंशन care मत of ले. her. इसको बताओ. What do you mean, our friends? She wanted me to look after you. Remember your promise, Garrett. You said you'd leave me behind. To help Sylvie. करूँगा टेंशन मत ले. I can't bear it anymore. He's been incredibly brave. A lesser man would have died days ago. But I suppose you already knew that about him. You said you'd help him. I wish I could. But I'm afraid it's too late for that now. Try to But he करके can देख still बस. use his death to give his life meaning. This was always intended for my father. It's a sacred symbol of the power of the North Grove. Forged from iron, the handle made with ironwood from this very tree. In my father's absence, you speak for House Forrester. It seems only right that you should have this now. Yeah, You're here for a reason, Garrett. It's no accident they sent you. Lord Gregor trusted you with the secrets of the North Grove. He must have seen something in you. Your friend is dying, but his life is too valuable to waste. Give me his heart, his beating heart. Then his death can have meaning. We can use it for a greater purpose, Garrett. An ancient ritual to help harness the power of the North Grove. But... We must do this, Garrett. I fear what might happen if we don't. ये क्या मांग रही है भाई? भाई उसका हार्ट मांग रही है. ये उसका हार्ट मांग रही है और वो बोल रही है कि अगर तू उसका हार्ट देता है तो ये नॉर्थ ग्रोव के लिए कुछ पावरफुल साबित होगा और कुछ होगा. भाई ये गेम बहुत खतरनाक जा रहा है. मेरे को लिटरली सोचना पड़ रहा है मैं क्या करूं. उधर अपन ने इसकी बहन को प्रॉमिस कर लिया है कि हम उसको मार देंगे. यहाँ पे ये डिमांड कर रही है कि मैं इसका हार्ट इसको लेने दूं और इसके हार्ट से ये जगह को और पावरफुल बनाए. तो इस क्या करना चाहिए? हार्ट दे दूं या फिर उसको मार दूं? देखो अपने में इतनी ताकत तो है कि अपन डिफेंड कर लेंगे. यहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी तो अपने पास है इतनी ताकत है कि हम लोग नॉर्थ को कर लेंगे डिफेंड. बहन को वादा किया है कि तेरे भाई को हम शांति से मौत दे देंगे. बट फिर बात ये भी तो है गाइस, मरने तो वो वैसे भी वाला है. मरने तो वो वैसे भी वाला है ना. हम बाहर जाके अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा तो मैं बोल दूंगा उसको कि भाई देखा मर गया तेरा भाई, बस उसका हार्ट किसी अच्छी चीज के लिए काम आ जाएगा. हार्ट देते गाइस. पर उसने यही बोला ना कि हम लोग ये जो नॉर्थ का जो है एरिया उसके लिए यूज करेंगे ना. वो अपने फायदे के लिए ले रही है तो फिर मेरे लग जाएंगे. अपने फायदे के लिए ले रही है तो मेरे को लग रहा है क्योंकि वो अपने फायदे के लिए ले रही है, नॉर्थ के फायदे के लिए नहीं ले रही है. तो टाइम भी ये लोग लिमिटेड दे रहे हैं. करूँ तो करूँ क्या गाइस?
देखो अल्टीमेटली उसको मरना पक्का है, कॉटर बचने वाला है ही नहीं। उसकी बहन ने हमको एक चीज दी है जिसको वो खा के, पॉइजन है वो, मर जाएगा। अब वो मर तो रहा ही है तो हार्ट काम आ जाएगा, जिंदा तो बच रहा नहीं है वो वैसे भी। I'll do what must be done. You saw what happened after the fight. My warriors, they're pulling away. Please, I need you to do this. For me, for the North Grove. I'm ready. Gareth. Please. Can't take it any longer. End his suffering. Use his life to make us strong, Gareth. Give him that poison, and his blood will be useless. Let us use his blood to give us strength. I'll do it. For the North Grove. I knew I could count on you, Gareth. Use a dagger to open his chest. We need his heart. वैसे ये थोड़ा पार्ट दिखाना सही नहीं रहेगा, अपन हार्ट वगैरह खोल रहे, तो ये पार्ट दिखा रहा नहीं हूँ मैं अभी, सिर्फ कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हार्ट ओपन वगैरह ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे को खुद को भी नहीं अच्छा लगता है, पर ठीक है अभी फटाफट कर लेते हैं। अभी नहीं Good. Now grab his heart, quickly, while his blood still pulses through it. Now bring it here. Squeeze the blood into the fire. While it's still warm. Donge treorekaig sprag, svogenes forbule. Thank you, Gareth. I know it was difficult, but you did the right thing. Now we must burn the body. जला देते। अल्टीमेटली तो मरने वाला था, किसी काम आ गया बस। मरने तो वाला था, बचने नहीं वाला था, हम उसको पॉइजन देके मारे। ये एक इंटरेस्टिंग है, अपन इसके बारे में एंड में बात करते हैं। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस। Remember, no matter how much they might provoke you, we must let them think they've won. टेंशन मत लो, क्या लेंगे। Here we go. माँ, तेरा असर जिंदा है माँ, आखिर तक लड़ेगा माँ। Clever. Send the girl first. Don't let her play with your head, little brother. Lady Forrester. My apologies for arriving unannounced. I was hoping I might have a word in private with Asha. गाइस इनको दिखाना है अपने को कि हम लोग हार चुके हैं और ये लोग जीत चुके हैं, और एंड में बूम मजा आएगा। ये सीक्वेंस के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, ये मेरे को देखना है। I think we can agree these are not ideal circumstances. Agreed. But these are the circumstances we find ourselves in. I know how you must feel, Asha. What your family has suffered, it's unimaginable. Which is why the bloodshed must stop. I agreed to your father's terms, didn't I? You did. But I know you, Asha. You're not the one to roll over so easily. You don't like being pushed into a corner. It's not in your nature. I don't need your sympathy. I agreed to your father's terms, that's all there is to say. I wish I could believe that. But I know you too well. You have to understand. I've risked everything to bring peace between our houses. Acha. To meet with Roderick in secret.
To tell him of the traitor within these very walls. To make sure no harm came to Ryan as our ward. All while persuading my father that bloodshed would end if we were to wed. I have no ulterior motive, no hidden agenda. Just peace, once and for all. I trust you, Gwyn. I know you've lost a lot, and I'm sorry, but things will get better. Truth be told, my father's scared of you. Is he? With Roderick, he knew who and what he was dealing with. But you, he thinks you're dangerous. You proved as much when you attacked his men. They came after us. I know, and that's all in the past now, I promise. We can make this work, Asha. This is our one chance. Together we can control the future of our houses. Just promise me, when my father and brother walk through that door, nothing will happen that could threaten that future. Our future. Nothing will happen. It's them I'm more worried about. They're more likely to do something than I am. I won't let that happen. Begging your pardon, my lord. I'm afraid Lady Forrester requires your help. Of course. I should go. What help does my mother need? Sorry, my lord. It was the best I could think of. But we have everything in place. How should we proceed? Ready the men. Of course, my lord. मेरे को शायद इससे वो उसको मालूम है कि अपन कुछ करने वाले हैं वो रेडी करके लाएगी अपने घर वालों को और ये येड़े नल्ले हैं ना इनको दिखाऊंगा अगर मैं हार चुका हूं तो ये लोग बराबर से रहेंगे इनके सामने फुल मेरे को हारा हुआ बिहेव करना है I'm sorry it's come to this, but at least it's done. Where's my son? Right to it then. इनको मेरे को दिखाना मैं हारा हूँ इनको मैं नहीं दिखा सकता मैं मेरे पास प्लान है कुछ Oh my baby. रायन आ गया Oh my baby. Enough blubbering. You can have him back when we've hammered out the details of your surrender. Lord Whitehill. Asher. Now, who'd ever have imagined this? You welcoming me into your hall to drink your wine and call me father. I thought I'd seen the last of you when Gregor shipped you off to the other side of the bloody world. Let's get on with this. What's the hurry? We'll be spending the rest of our lives together. As family. You're not my family, Lord. And you'll never be mine. If I wasn't so bloody soft-hearted... Father, please. I know this isn't easy, but it's right. Would you like to sit down, Lord Whitehill? Aye. And get us something to eat. I'm bloody starving. We thought you'd like to sit here, Lord Whitehill. I'll sit there. Thank you very much. In the Lord's chair. It's not like your father wanted your worthless ass in it. It's just a chair. By all means, sit in it if it makes you feel important. What? How dare you? You think you have any power here? What'll it take for you to learn to show respect? How many more Foresters do I have to kill? Calm down, Father. Ash has been amongst sellswords so long, he's forgotten how to behave. Teach him some manners, then. इनको फील नहीं होना चाहिए ना कि मैं इतना जल्दी सुधर कैसे गया Rather odd that Talia's not here, isn't it? And your banner men look a little tense. What are you playing at, Forrester? Something's not right. I can feel it.
You're not enjoying the party? Don't play games with me, Forrester. See, that's the trouble with you, Forresters. No manners. At least Roderick had enough decency to carry a proper conversation. I knew you. चल तेरी तो नल्ले निकल. बहुत हो गया तेरा भी. अब बहुत हो गया रे, बहुत हो गया. Enough is enough रे guys, बहुत हो गया. रायन तेरे को कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले. भिक्षा है ना मेरी, टेंशन मत ले. ये लूट को जाने मत देना. लूट तेरी माँ की लूट जाने नहीं दूंगा तेरे को. ऐसे कुछ करो. ऐशर लेट्स गो. नहीं जान दूंगा उसको. इधर संभालो तुम लोग. तेरी माँ का लूट. रुक तेरे को छोड़ूंगा नहीं. ग्रिफ मत आ बीच में. आज तेरे को कोई नहीं बचा पाएगा. तेरा बाप भी मरेगा, तू भी मरेगा. जल्दी कर ऐशर, जल्दी कर. इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते इतना. ऐशर जल्दी कर, इसको मार. पेड़ ऐशर, पेड़ घुसा. चाकू घुसा. तेरी माँ की. मेरे भाई को कैसे मारा? रॉड्रिक को कैसे मारा? 2 चाकू और घुसा. मेरे भाई के लिए था ये, समझा? निकल जल्दी जा. अरे नहीं, मार इसको भी. इसको भी मार इसको. Goodbye, Asha. इतनी जल्दी नहीं. ऐशर इतनी जल्दी नहीं मरेगा. अरे ऐशर कैसे यार? अरे यार इतना किया था यार. ऐशर को बचाओ. They're trying to kill us! Kill them all! Kill the fucking Foresters! Take down the gate! नहीं. We can't fight that many! We're doomed! If they breach the gate, we're done for! We can't fight the entire Whitehill army! नहीं ऐसा नहीं हो सकता. My lord, your wound. Get them to safety. Of course. I won't abandon you, not again. Please, mother. नहीं यार, एक बार फिर से नहीं. एक बार. नहीं यार, एक बार फिर से नहीं. प्लीज नहीं. ऐशर नहीं, प्लीज. नहीं यार. नहीं. Asha! Our lord is here! Rise to your lord! He's here! Let's go, boys. आखिरी बार है. My lord, your command. गेट को डिफेंड करो. Retake the gate! We have to retake the gate! गेट को रोको. वो अंदर आएंगे तो दिक्कत होगी. This is the war you promised, Mr. Rossi. It's not over yet! To Asha! Let's go, boys. आखिरी बारी एक. Let's go. Let's fucking go. Attack! मारा करो, खोलो. Let's go, Asher. Let's go. मैं फुल सीरियस जा रहा हूँ अभी. Let's go, boys. Let's go. नहीं. Let's go, Asher. You can do it, Asher. आगे बढ़ो. The cowards have us pinned.
dear Westerosi. Let's give those fuckers a welcome to remember. खोल दो, let's go. Let's go boys, let's go for one last time guys, please. Asher नहीं तेरे को कुछ नहीं होने दूँगा. Let's go Asher मेरे भाई चल. नहीं, इस बार नहीं. Asher Forrester. नहीं. Come a long way to die. नहीं. तेरी माँ की निकल, मेरे को मारेगा. नहीं. पीछे से बैकस्टैप ना करे बस कोई. बैकस्टैप नहीं चाहिए बस प्लीज. जो आ रहा सामने से आओ. बैकस्टैप नहीं प्लीज. पीछे से चाकू नहीं खा सकता मैं. नहीं. ओए. नहीं ऐशर नहीं. इतनी जल्दी नहीं. ऐसे नहीं. नहीं ऐसे नहीं. Let go of my son! Forrester! अरे तेरी माँ. नहीं ऐसे कैसे. नहीं ऐसे नहीं. नहीं ऐशर नहीं. चल तेरी तो माँ को मारा मेरी. चल तेरी तो निकल मुंह से बाहर सारा इसकी तो. ऐशर नहीं. आराम से. सब गए रे गाइस. माँ भी गई, सब गई. क्या मिला? क्या मिला रे? क्या मिला आपने? ऐशर चल उठ. ऐशर उठ. और कितने इनके पास? और कितना है इनके पास भाई बंदे? चल ऐशर आखिरी सांस तक लड़ेंगे. चल आखिरी सांस तक लड़ेंगे. चल इतनी जल्दी नहीं ऐशर, इतनी जल्दी नहीं. उठ. मार खाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं ऐशर. नहीं. वन मैन आर्मी ऐशर. अपन वन मैन आर्मी है. चल वन मैन आर्मी ऐशर. चल. हार नहीं मारनी ऐशर. चल अकेले निकल यहाँ से. ऐशर नहीं यार, रुक नहीं सकते. नहीं ऐशर नहीं. ऐसे नहीं. लड़ेंगे आखिरी सांस तक लड़ेंगे ऐशर. जिंदा नहीं बच पाए तो I am promise. चल ऐशर. Duncan? We have to get you out of here. I'll be damned if I let another lord die on my watch. Save yourself. You must survive, Asher. हमको जीना होगा. The house. For all of us that fought this day.
अगली बार फिर आऊंगा। मैं भूला नहीं हूँ, भूलूंगा नहीं, मैं फिर आऊंगा। डंकन सलाम है मेरी जान, सलाम है तेरे को, सलाम है डंकन। अरे पूरा कियास हो गया, पूरा कियास हो गया। ये एंड नहीं सोचा था यार, ये एंड नहीं सोचा था, एंड ऐसा होगा ये नहीं सोचा था यार, एंड ऐसा होगा ये नहीं सोचा था भाई, एंड ये ऐसा एंड नहीं चाहिए था यार। What you did was right. I did what I had to do. I'll let you light the pyre. एशर के साथ यार बहुत गलत हुआ इस, कोई ना, सारी फैमिली को एक रखना चाहा था गाइस रॉड्रिक ने। यहाँ अगर रॉड्रिक होता तो गाइस रॉड्रिक से भी मैं यही करा था जो एशर ने किया, एम्बुश ही होता गाइस। चलो गिरफ्त तो गया, एशर गया, एशर नहीं गया सॉरी, रॉड्रिक गया, ईथन गया, उसके बदले हमने ग्रिफ लिया। उसकी बेटी को मैंने चाकू क्यों नहीं घुसाया? Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason. To protect the North Grove. Winter is coming, and we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironrath. It may already be lost. You know protecting the North Grove is the right thing to do. Those were Gregor's last words. They sent you. You should decide. I will respect Lord Gregor's dying words. The North Grove will never be lost while we breathe. We will defend it. Like this was not the end. In the name of the king, I hereby sentence you to death. Like guys, नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं है यार, ऐसे नहीं भाई, ये एंड नहीं हो सकता इस सीजन का। नहीं गाइस नहीं, Bring forth the next prisoner. This young woman is accused of murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to her crimes? I will speak to them. This woman is a traitor and a murderer! Kill her! She's innocent! A disgrace to her family name! Spare her! Traitor! Take her head! Mira Forrester, in the sight of gods and men, and in the name of the king, I sentence you to die. टॉम कुछ करना पड़ेगा, टॉम देखो कुछ करना पड़ेगा। She's innocent!
kneel. नहीं guys, नहीं. नहीं, मुझे लग रहा है टॉम कुछ करेगा. टॉम कुछ करेगा, ये ऐसे नहीं मरेगी. टॉम कुछ करेगा. टॉम कुछ करना है देखो. टॉम नमक हराम साले, ऐसे रहमत तूने मारा था उसको, मैंने नहीं मारा था. टॉम तेरे को कुछ करना पड़ेगा. टॉम नहीं, टॉम को कुछ करना पड़ेगा. कुछ तो होगा. मीरा ऐसे नहीं मर सकती. मीरा नहीं मरेगी. मीरा नहीं मरेगी. मीरा के पास बहुत क्रूशल रोल है अभी. ये नहीं मरेगी. नहीं guys, नहीं. नहीं यार, नहीं. ये नहीं यार. ये नहीं है यार. सोलर भी है ना. गुड मॉर्निंग ऐश भाई. भाई यार ये एंड नहीं है यार. ये एंड नहीं भाई. ऐसा एंड नहीं भाई. House Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the Wise. With some parasite by his side. As if I'd come to negotiate. And I thought, oh, this is going to be fun. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. Grandmother, that day Cersei dragged her before the throne, she claimed loyalty to me right in front of her. But then she had the audacity to go behind my back and meet with Tyrion when I'd clearly forbade it. And then that letter she forged to Elena Glenmore, as if I wouldn't find out. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. And now, with all that's happened to her, who knows what else Mira was doing without my knowledge? Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Garrett Tuttle. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, her brother was dead at the foot of the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the Watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. Back from the twins with balls so shrunken he let Griff Whitehill beat him into the mud in his own yard. Reek, I had to come and see this walking tragedy for myself. But then, he tried to stab me with my own blade. I was rather starting to like him. A shame he didn't last longer. Roderick. The
The savior who couldn't save anyone. There was something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandai. He was rather earnest, I suppose. But he had heart, fighting with a former slave by his side. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. And he impressed me. He followed my every command, despite what it cost him with his companion. For that, he earned my help and my respect. Loyalty, friendship, respect. Without them, we have nothing. I think, in the end, Mira came to understand that, Grandmother. She could so easily have turned on Sarah to protect herself. But instead, what she did, it took grace. If you're fierce enough, you leave King's Landing with your honor intact. Mira proved that. But at so high a cost. I could have told you the story wasn't going to have a happy ending. Roderick dead, his mother dead, his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I know these Forresters. If they had any sense, they'd know when to bend the knee and live to see another day. They fought hard, I'll give them that, but they were reckless. Shrewd when they should have been bold. Impetuous to the last. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost. भाई ऐसे खत्म नहीं करनी थी भाई ये गेम। Asher, hey Asher. Asher? My lord. We don't have much time. They may have won this battle, but they will not win this war. How you doing, my boy? देखा गाइस अपन ने इसको छोड़ा तो अभी ये काम आ रहा है ना एशर के लिए, क्योंकि इसको शुरू से एशर चाहिए था। पिक्शा ने भी इसको बचा लिया। रॉड्रिक और इसकी माँ भी होती तो मजा आ जाता। सीजन 2 is awaiting guys. सीजन 2 अभी तक गेम खत्म नहीं हुई है ये। सीजन 2 is waiting for us guys. सीजन 2 is waiting guys. सीजन 2 is waiting. That's it. Unbelievable guys. Unbelievable. भाई क्या स्टोरी थी भाई, क्या स्टोरी थी। ये एंड नहीं है गाइस, ये एंड नहीं है। सीजन 2 बाकी है। सीजन 2 में क्या होगा आई डोंट नो। क्या स्टोरी है गाइस, क्या स्टोरी है यार। तुम लोग फील करो ना यार, तुम फील करो क्या स्टोरी है यार, क्या स्टोरी है। क्या स्टोरी थी भाई।
भाई देखो एकदम शुरू से अगर इस फटाक से मैं समराइज करूँ तो गेम बहुत ओपी थी। गेम मतलब ऐसी गेम हो ही नहीं सकती जो कि इतना एक्शन रखती हो, इतना थ्रिल रखती हो, इतना इंटरेस्टिंग रखती हो। एट दी एंड अब भी करंट सिचुएशन की बात करूं मैं तो जो राउडी था, अपन उसको राउडी बुलाते हैं, तो जो राउडी था जिसने अपने को बिट्रे किया था रॉड्रिक के टाइम पे, रॉड्रिक के पास ये ऑप्शन था शुरू से, एक बार लेते हैं चलो। गेम स्टार्ट हुई थी वहां से जहां से जो इनका सबसे पहला लॉर्ड था जो कि इनका डैड था एशर रॉड्रिक इन सब का, उसको मारा गया था। उसका जो सिपाही था वो सिपाही था गैरेट। गैरेट को उसने एक मरते मरते एक राज बताया था कि नॉर्थ ग्रोव करके एक चीज है, उसको एक मैप दिया था और कहा था कि नॉर्थ ग्रोव हमारे हाथ से कभी जाना नहीं चाहिए। नॉर्थ ग्रोव सबसे इंपॉर्टेंट था, ये गैरेट को बताया गया था। गैरेट घर वापस जा रहा था, गैरेट को रास्ते में उसके डैड के मर्डरर दिखे। गैरेट ने बदला लिया। उसके मर्डरर कुछ जो उसके डैड और उसके सिस्टर को जो मर्डर कर रहे थे उसके कुछ 3 से 4 लौंडे थे। गैरेट ने 1 से 2 लौंडों को खाया, 2 लौंडे बच गए थे। वो जो 2 लौंडे बच गए थे वो लौंडे थे रैमजी के, ठीक है। और रैमजी और ये व्हाइट हिल जिसके साथ अभी हमारा पंगा हुआ, जिसके साथ पूरी कथा हुई रैमजी के व्हाइट हिल के साथ, वो और रैमजी मिले हुए थे। तो जैसे ही गैरेट घर पे आया, गैरेट ने घर पे आके डंकन को बताया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है। डंकन ने बोला कि तू अगर यहाँ रहेगा तो बहुत दिक्कतों में आएगा, तू एक काम कर, तू यहाँ से कहीं और जा। उसको जगह दी, एक बता दिया कि तू यहाँ जा, और गैरेट उधर फ्रॉस्ट फिंगर के वहां उसको भेजा। गैरेट फ्रॉस्ट फिंगर के वहां चलेगा और पीछे से रैमजी आता है। पीछे जो दूसरा लॉर्ड, जो नया लॉर्ड बना था, वो था ईथन। ईथन ज्यादा बड़ा नहीं था, ईथन बच्चा था, टीनेजर था, मेरे जैसा समझ लो। ईथन को अगला लॉर्ड बनाया। ईथन डिसीजन ले रहा था, उसके डिसीजन मेकिंग में कुछ गलती हुई और जिसके वजह से उसको भुगतना पड़ा। रैमजी ने उसको डिच किया, रैमजी ने उसको चाकू डाल के मार दिया। रैमजी के बाद आया रॉड्रिक। रॉड्रिक जिधर जहाँ पे गैरेट और उस गैरेट जिसके लिए काम कर रहा था, जिस लॉर्ड के लिए, जो कि इनका डैड था ईथन और रॉड्रिक का और एशर का, रॉड्रिक भी उस फाइट में था जिस फाइट में गैरेट था और वो लॉर्ड था बड़ा वाला सबसे। रॉड्रिक भी वहां पे बहुत घायल हो गया था, बट रॉड्रिक कैसे ना कैसे जिंदा बच गया था। रॉड्रिक को घर पे कोई तो भी लेकर आया था वापस, घायल हालत में था। जैसे तुम लोग देख रहे थे आधा सीजन तो पूरा लंगड़ी टांग पे चला है, हाथ फ्रैक्चर था उसका, जैसे जैसे करके उसको ठीक किया और अगला लॉर्ड बनाया रॉड्रिक को। अब जब रॉड्रिक लॉर्ड बना तो सीन ऐसा हुआ कि सिचुएशन ऐसी थी कि आर्मी नहीं थी रॉड्रिक के पास। एक रॉड्रिक था, रॉड्रिक का डंकन था, एक ट्रेटर भी था, यानी कि एक अंदर बंदा था जो कि इधर की बातें उधर कर रहा था, जो कि आगे पता चला जो कि राउडी था, जो आगे पता चला, बहुत आगे पता चला वो बिट्रे कर रहा था राउडी हमको। ट्रेटर था। उसके बाद हमारे पास आर्मी नहीं थी, तो हमारे पास हम लड़ाई कर ही नहीं सकते थे रॉड्रिक के टाइम पे। रॉड्रिक के टाइम पे जो हम कर सकते थे वो कर सकते थे पीस। हमने रॉड्रिक के टाइम पे पीस करने की कोशिश की। रॉड्रिक ने व्हाइट हिल के सामने नील डाउन करके उसकी रिंग को पीस किया, ग्रिफ के सामने सबमिट किया, रॉड्रिक ने सब किया। रॉड्रिक ने लेकिन मारा मारी नहीं। एंड में रॉड्रिक ने थोड़ा सा आर्थर, जो कि एलिना का भाई था, जो कि रॉड्रिक की होने वाली बीवी थी, उसका भाई भी मरा। उसकी भाई की जो आर्मी थी उसके साथ लेके रॉड्रिक ने थोड़ी चाल तो चली थी और इसको मारा था, क्या कहते हैं, ग्रिफ को पकड़ा था, मारा भी नहीं था। ग्रिफ को मार सकते थे लेकिन ग्रिफ को हमने मारा नहीं। ग्रिफ को हमने इसलिए नहीं मारा क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि अगर हम ग्रिफ को मार देंगे तो वहां पे सामने वो रायन को मार देगा। ये एक पॉइंट थी हमको। हमारा जब रॉड्रिक था तो हमारे रॉड्रिक के दिमाग में ये था, हमारे दिमाग में ये था कि हमको सारी फैमिली को इकट्ठा करना है। अब जितने भी बचे कुचे लोग हैं सबको इकट्ठा करना है, रायन को मरने नहीं दे सकते। सीधी सी बात है यार, अगर मैं उसके एक बेटे, अगर उसके बेटे को मैं यहाँ पे मारूंगा तो मेरे पास उसका भाई है छोटा, सजा के तो रखेगा नहीं, उसको मारेगा। यहाँ अगर मैं इसके बेटे का मारता हूँ तो वहां मेरा भाई मरता है। तो मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसको कैद करके रखा। राउडी था ट्रेटर, राउडी था हमारे घर में तो सांप था, समझ लो। तो राउडी था सांप, उसने ढसा हमको, उसने इंफॉर्मेशन दी कि ग्रिफ को उन्होंने बांध के रखा है।
रैमजी आ गया ग्रिफ को छुड़ाने, क्योंकि व्हाइट हिल और रैमजी मिले हुए हैं, और रैमजी आ गया उसको छुड़ाने। रैमजी ने ग्रिफ को छुड़ा दिया। वहाँ पे रॉड्रिक गया था डील करने व्हाइट हिल के पास, तब जाके व्हाइट हिल उसको वापस पीस के लिए डिमांड करता है। रॉड्रिक वहाँ भी हाँ बोलता है, क्योंकि रॉड्रिक ने डिसाइड किया था कि वो अकेले मिलने जाएगा। रॉड्रिक के साथ था राउडी और उसकी माँ, ये 3 लोग ही सिर्फ व्हाइट हिल के इतने बड़े अड्डे में गए थे बिना कोई आर्मी लेके। हालांकि रॉड्रिक के पास ऑप्शन था, जो आर्थर के जो थे आर्मी थी उसको लेके जा सके, मतलब वो भी मेरे डिसीजन थे, हीरो बनना चाहता था, पर वहां पे हमने उड़ते हुए तीर लिए। रॉड्रिक वापस आया, वापस उसको पीस लेना पड़ा। रैमजी आया, रैमजी के सामने फिर से झुकना पड़ा, बट जैसे ना कैसे करके हमको एंड में पता चला राउडी ट्रेटर था, राउडी हमको बैक पिच कर रहा था, राउडी को भी हम मार सकते थे, बट अभी के टाइम पे राउडी ही हमको काम में आ रहा है, राउडी ही हमको बचा रहा है, एशर को बचा रहा है। यानी कि राउडी का ये मानना था रॉड्रिक को पहले ही वॉर कर लेना चाहिए था और पहले ही मारामारी कर लेनी चाहिए थी, जो कि एशर होता तो एशर कर देता। अब एशर ने वॉर छेड़ दिया, सब चीजें अगेंस्ट में गई, बट राउडी को ये अच्छा लग रहा है कि एशर ने वॉर किया, इसलिए राउडी एशर का साथ निभा रहा है और एशर को अभी बचा रहा है। ठीक है, तो एक काम यहाँ पे अच्छा हो गया कि चलो रॉड्रिक मर गया, पर रॉड्रिक ने जो राउडी को छोड़ा था वो अब एशर के लिए काम आ रहा है। ये एक चीज अच्छी हो गई यहाँ पे कि एशर तो बच जाएगा, हमारे पास होप रहेगी कि सीजन 2 में हम वापिस स्ट्रॉन्ग है और सारे बदले ले। ठीक है, मैं भूलूंगा नहीं एक भी चीज। उसके बाद जो सीन हुआ, रॉड्रिक ने फाइनली डिसाइड किया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वॉर करते हैं। वॉर के लिए एशर वहां से आर्मी लेकर आया। जैसे ही वहां पे भी हमारे पास ऑप्शन था कि हम एशर को बचा ले, बट वहां पे भी मेरे को लगता है सेम ही सिचुएशन होती। हम एट द एंड एशर को लेने तो पहुंच ही गए थे, हमको बैकस्टैप कर दिया गया, ऑफ गार्ड पकड़ लिया गया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बच के जा सकता था। जहां हमको ऑफ गार्ड पकड़ा, वहां पे ऑफ गार्ड पकड़ने के वक्त हमको दो ऑप्शन थे, मतलब या तो हमको एक ही चूज करना था उसमें से, या तो राउडी अपना, या तो एशर बचता या तो रॉड्रिक बचता। अब रॉड्रिक पीस वाला बंदा था, वॉर पे उतर आ गया था। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम रॉड्रिक को बचा देते या तो हम एशर को बचा देते। मैंने चूज किया एशर। मैंने एशर इसलिए चूज किया कि रॉड्रिक को पहले धमकियां मिल चुकी थी कि एशर मरने वाला है। अगर रॉड्रिक वापस जाता, एशर मर जाता, तो वो धमकियां सच हो जाती और उसको रॉड्रिक को वो होता, और रॉड्रिक को ये होता कि भाई हाँ मैं एशर को बचा सकता था, मैं बचा नहीं पाया। प्लस रॉड्रिक की एक टांग लंगड़ी थी, उसका हाथ फ्रैक्चर था, बूढ़ा हो चुका था। कब तक, अगर उसके साथ मैं वॉर जीत भी जाता तो भी आगे कहीं ना कहीं कैजुअलिटी आती, रायन जाने के चांसेस हो सकते थे, अब कुछ भी हो सकता था। रॉड्रिक ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। एशर यंग था और गर्म खून था, खेलना वगैरह उसको बहुत अच्छे से आता था। एंड में भी देखा कितना, मतलब एंड तक फाइट किया अपन, एंड तक बच के 3 से 4 चाकू खाने के बाद भी निकले हैं, और बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है बचेंगे, क्योंकि गेम है ही नहीं। तो फिर हमने एशर को बचाया, एशर वापस गया, एशर ने मारामारी की, वॉर किया, एम्बुश हुआ, जितना भी देखा एम्बुश वगैरह की प्लानिंग की। अभी भी हमारे पास मौका था एशर के पास भी कि एशर भी पीस में आ जाए, बट जब इतना किया किसके लिए, अगर पीछे चाहिए रहता तो मैं रॉड्रिक को बचा देता, बट पीस कितना पीस करेंगे, मतलब पीस करते रहते तो पूरा जिंदगी उनके अंडर आ जाते हम लोग। हमने किया एम्बुश में हमारे ऑलमोस्ट पूरी फैमिली डेड हो गई। अब जो लोग बचे हैं उनमें आते हैं गैरेट, जो कि है नॉर्थ ग्रोव में है गैरेट, और उसके साथ है एशर जो कि घायल अवस्था में है, जिसको बचा रहे राउडी और टालिया जो कि उसकी बहन है, और भिक्षा के पास है रायन। अब भिक्षा और रायन किधर और है, राउडी टालिया एशर कहीं और है, गैरेट कहीं और है। बस अब यही गिने चुने लोग हैं जो कि बचे हुए हैं, और एक बंदा बचा हुआ है, वो है मैल्कम है, वो ड्रैगन वाली रानी के पास। गैरेट है नॉर्थ ग्रोव में, गैरेट के पास एक छोटी सी आर्मी है नॉर्थ ग्रोव वाली। अब वो छोड़ के अगर वो यहाँ आ गया तो नॉर्थ ग्रोव चले जाएगा। नॉर्थ ग्रोव हमको पहले ही बता दिया गया है कि नॉर्थ ग्रोव बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम उसको जाने नहीं दे सकते। तो सिचुएशन बहुत ही वो है, और जहां तक मैंने देखा है सीजन 2 अभी तक आया नहीं है। एक्साइटमेंट काफी रहेगी सीजन 2 का क्या सीन है, मैं अभी बैठने वाला हूँ, अभी देखने वाला हूँ सीजन 2 का क्या सीन है। अगर सीजन 2 अवेलेबल रहा, वी आर नॉट स्टॉपिंग, हम सीजन 2 खेलेंगे। बीजीएम आ गया भाड़ में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर सीजन 2 अवेलेबल नहीं है तो हमको बीजीएम पे शिफ्ट करना रहेगा। जो भी अपडेट होगा स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे पता चल जाए, फॉलो नहीं किया कर लो,
मेरे को मतलब ये टोपी उतार देता हूँ यार, ये बालों के सेट नहीं होते, उसके लिए पहन के रखी। हाँ, मेरे को पूछोगे ऑनेस्टली, मैंने नहीं खेली भाई ऐसी गेम, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी ऐसी गेम मोबाइल में। इमेजिन करो, ग्राफिक देखो, एक्शन देखो, स्टोरी लाइन देखो भाई, ऐसी पीसी में मिलती है भाई। मजा आया, फील आया मेरे को तो पूरा। पैसा वसूल गेम थी, पैसा हालांकि मैंने कुछ लगाया नहीं, बात अलग है, पर मजा आया। आज अपन ने 2 एपिसोड खेल लिए, खेलना एक था पर खेल 2 लिए अपन ने। फाइनल एंड आज कर लिया है। थंबनेल वगैरह मैंने उस हिसाब से प्रिपेयर किया नहीं था। इसके बाद अभी प्लेलिस्ट बन जाएगी स्ट्रीम्स की, देखना होगा देख सकते हो, वीडियो वगैरह भी आएंगे, इसके हाईलाइट्स भी आएंगे, बट अभी नहीं, हाईलाइट्स को टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा हाईलाइट्स बनाने के लिए, एक एक पार्ट मेरे को देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक लंबी ब्रेक लूंगा, हाईलाइट बनाऊंगा, ये बात पक्की है, ब्रेक भी लूंगा बड़ी, ये भी बात पक्की, ठीक है। मजा करो, एंजॉय करो। मैं भी जाता हूँ अभी सोने के लिए, पहले रिसर्च करेंगे सीजन 2 के बारे में, देखेंगे क्या अवेलेबिलिटी है, इंस्टाग्राम पे अपडेट डालेंगे और फिर जाएंगे सोने के लिए। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लेंगे, कितना ही टाइम लगेगा, है कि नहीं। और एज भाई यहाँ पे एक हाथ 2 हार्ट स्पैम करके चले गए हैं शायद, अभी तो है नहीं, कभी किया था 351 किया था ना, 355 है, 4 मिनट हुए। बाय बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा ऐश भाई है ऐश भाई है, गुड नाइट ऐश भाई। मतलब अच्छा लगता अगर मेरे साथ ये जो जितनी भी सीरीज अपन ने खेली है पूरी, ये सीजन खेला है पूरा, कुछ 5 स्ट्रीम की है, अगर 5 स्ट्रीम में कोई भी एक बंदा भी अगर 5 स्ट्रीम में पूरी स्ट्रीम साथ रहता, साथ में देखता ये पूरी गेम, कोई मजा आता, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता कि भाई एक बंदा तो था जिसने देखी पूरी गेम, बट कोई नहीं ऐसा, किसी ने हार्डली आधा घंटा भी नहीं देखा होगा ये गेम को सीरियसली बैठ के, देखा रहता आधा घंटा तो उसको पसंद ही आई रहती, लिंक लग जाती, फिर वो कंटिन्यूसली देख रहा होता। पर खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी जाते हैं सोने के लिए। स्ट्रीम होगी कल एज यूजुअल, कल होगी बीजीएमआई स्ट्रीम, ठीक है। कल फाइनली हम बहुत टाइम बाद बीजीएमआई खेलेंगे ऑन स्ट्रीम, काफी टाइम हो गया बीजीएमआई नहीं खेला है स्ट्रीम पे, तो कल होगा बीजीएमआई टाइम। और बताता हूँ कल क्या विषय होता है, बाकी सब तो बढ़िया ही है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, पिंड है लिंक, फॉलो कर लो, अपडेट देता हूँ वहाँ पे कैसे क्या रहा। पर गेम भाई कुछ ही बोल रहा हूँ, ऐसा गेम मेरे को और चाहिए, मैं ऐसे गेम और ढूंढूंगा, और ऐसे गेम बहुत देखने को मिलेंगे तुमको अभी अपने चैनल पे। पर अभी के लिए मतलब गला फट गया है मेरा, पानी की आवश्यकता है, तो मैं तो ठीक है, गुड नाइट। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, वर्थ इट, मेरी बीजीएमआई स्ट्रीम से भी ज्यादा वर्थ इट है ये स्ट्रीम, मजा आ गया। चलो टेक केयर गाइस, गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल बीजीएमआई स्ट्रीम पे, ध्यान रखो अपना, अभी रखता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर, पीस आउट, मिलेंगे कभी कल 12 बजे, आ जाना, बीजीएमआई होगा, बीजीएमआई ऑडियंस, ठीक है, आ जाओ, गुड नाइट, टेक केयर।